Very good afternoon to the viewers of today's VCM on very important topic. What virtual CPE on young India investing in market. We have the authority on the subject, none other than CA Dr. Aman Chugh, who has been awarded as the father of financial market by CMA Institute. He is the recipient of International Research Award being organized by ICI and endorsed by IFAC, International Federation of Accountants, is an apex body of 170 institutions like Institute of Chartered Accountants of India. So it's our privilege that we have that authority with us to deliberate on the very pertinent topic. We have Gaurav Gupta ji, the respected Deputy General Manager of IPF Authority, who is a civil servant. And we have another civil servant, a young guy, Sumit Agrawal ji, AGM of IPF Authority. So, dear viewers, first I would like to congratulate all of you. मैं गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे आप सब लोगों को गणतंत्र दिवस की बधाइयां देना चाहूंगा. इसके साथ ही today we have a national voter day. I would like to congratulate all of the viewers on this very important day, because without voters and a जागरूक उपभोक्ता, जागरूक इन्वेस्टर की तरह ही एक जागरूक वोटर हमारे देश का नीति निर्धारण करता है. So I would urge those who has joined and is going to be turned in 18, please get themselves enrolled for voting rights as a voter, because ultimately the power is with the voters, and the voter who decides the destiny of any country. So I would request all the viewers, those who has not yet enrolled themselves as a voter, should enroll if they are eligible. I would not take much time because I don't want to come in between Amanji and the viewers, because a lot of is to be discussed. Topic is very wide, and I used to listen him. I used to read him in various platforms. He's a very good speaker and authority on the subject. I don't hesitate to tell him, tell about him that he's an authority. Whenever I stuck somewhere in the capital market, I always found him a troubleshooter. For a formal introduction, I take privilege to first introduce Dr. Aman Chugh. I can speak without any paper because I know him since past 10 years. But let me read his profile. I think I can find something new in the profile. CA Dr. Aman Chugh, who has addressed over 1 million industry professional and financial advisor across 78 countries, including India. He's a reputed name in the domain of financial market, portfolio management, derivatives. Having gained experience working at reputed brands including PwC, EY, Dubai, GE, USA, ICICI Bank in varied profiles of investment banking, corporate banking, derivatives and risk management, financial planning and portfolio management. He is presently a consultant and trainer to Fortune 500 corporates, large consultancy firms, government ministries and associations, industry associations, reputed ministries in India and abroad. His views are often covered by reputed print media houses and is regularly invited for national and regional media channels. He happens to be one of the very few doctorate in currency and interest rate derivative, during which he has evolved original theories of risk management using derivatives for MSME and large corporates. He has also authored first ever tactical book on currency and interest rate derivatives published by Pearson. He has been honored with the title of Guru of Financial Market and Father of Financial Planning and Portfolio Management and Derivative by NIRC of the Institute of Cost Accountant of India. He commands over 1.2 million searches over Google with a huge fan following over social media as well. So this is the brief profile. A lot can be discussed about Aman Chugh's encyclopedia. I can discuss 2 hours on his profile, but I will not take that much of time. Now I take opportunity to introduce Gaurav Gupta ji, who is the DGM of IPF Authority presently, and he is a ICLS batch 2014 officer, civil servant. He's an engineer, and then he has done CS, company secretary,
He served in ROC Delhi, he served in CRC Kerala, and now presently he is working with IPO Authority. I found him a very innovative officer, and whenever I reach to him, he is always troubleshooter. We have a connect as a professional institute and IPF Authority. I found both these officers ever smiling, Gupta ji and Sumit Agrawal ji. Sumit Agrawal ji is the AGM of IPF Authority. He is also civil servant. Uh, with best of my knowledge, Sumit Agrawal ji is AFHQ, Ministry of Defense. He is a civil officer and he's presently is the AGM of IPF Authority. So I must welcome all the dignitaries who has spent their time. Now I would request Gaurav Gupta ji, DGM IPF Authority, for his opening remark. Thank you, Dr. Amit Agarwal, CA Dr. Aman Agarwal, my colleague Sumit Agarwal from IPF Authority, and all our dear viewers. I welcome you all on behalf of IPF Authority to this organized webinar, which has been organized by ICAI. I must congratulate ICAI as an institute because it has always pioneered the effort of investor education, be it with its association with IPF Authority or Ministry of Corporate Affairs or with other regulators. ICAI has been taking suo moto efforts to not only spread investor awareness but also to educate masses about all the initiatives which the government has taken, which all other regulators are taking. Insofar as our association with CA Aman Chugh is concerned, he has been very kind to take various initiatives and various lectures for IPF Authority. We had earlier collaborated him with a live lecture in our in our state conference at Dharamshala. He is a very pioneer speaker as well as a knowledgeable person in this area of stock market investing. Insofar as today's topic is concerned, stock market or investing is a slippery slope. If you don't have the perfect knowledge or adequate knowledge, you are you are not assured success. Therefore, whenever we say that people should invest, we say that first people should learn, have knowledge, develop skills. Then only they have the uh, adequate aptitude to judge and decide for themselves what is right for them and what is not right for them. It's an individual choice. Obviously, all the situations are not same. Therefore, developing the adequate skills, knowledge, which we can do by reading as well as listening to expert speakers like Dr. Aman Chugh, then only we can appreciate the growth opportunities which the market provide. Otherwise, as we say that in the market, if there is a a successful person, then on the other side there is also a loser. So we have to appreciate the market in right context. We have to develop skills, and I think that today's discussion which we will have in this webinar will go a long way in enriching all of you. We will definitely have a fruitful session which will add to our skill as well as to our knowledge. With these words, I again congratulate Dr. Aman Chugh, Dr. Amit Agarwal, and the IPFA team led by Sumit Agarwal, our AGM, who have taken all the efforts in organizing today's program. Thank you and all the best from IPF side. Thank you, Gaurav sir, for your wonderful opening remark. It's really very motivating words. It give us more energy to have more awareness activities. Now I would request CA Dr. Aman Chugh ji for his deliberation. नमस्कार है, जय हिंद है. So ideally, heartiest जो gratitude है वो तो हमेशा it's always been there with Amit sir. He has given me plenty of opportunities to be addressing galaxy of stars, and special thanks to Gaurav ji as well for reimposing faith in me to speak amongst various galaxy of stars we present today as well. Before I kickstart, today we'll be discussing on broad 5 agendas. One, I'll be speaking on the broad vision which I have for you, and maybe people across country, whether chartered accountancy background or not, whether young chartered accountants or not.
I feel everyone is young at heart, so I would call it this way: कि सारे ही young हैं. And in order to kickstart, maybe a broad vision for you all will be the starting point for me. Second, then we will move on to understanding reality of broad markets. Third phase, we will be moving about a bit of understanding as to what do people call on fundamental and technical side. The fourth would be a deep diving into Nifty and Sensex reality. And the fifth would be something unique, which I am assuming you would be hearing for the first time. And I can assure you, the fifth agenda we'll speak about 45 minutes or so. And hence, before that, the four remaining agendas I'll try to cover in the next maybe 30, 40 minutes or so. First, a broad vision. Speaking about Indian economy particularly, everyone amongst us, whether we are chartered accountants, whether we are lawyers, doctors, engineers, whether we come from any background, we all are pretty busy in earning money. That means Monday till Saturday, we are busy in our hard schedule to earn hard-earned money, because everyone believes that we need to be making more money so that one fine day we can retire in life and enjoy our life. Because during this Monday till Saturday, we tend to ignore our families, we tend to ignore our health, we tend to ignore our present lifestyle as well. And we believe that one fine day I look forward to early retirement. And for that, from Monday till Saturday, I'm busy from 6 in the morning till maybe 10 in the night. Depending, if we are based out of Bombay, maybe catching up a local train. If we are in Delhi, maybe catching up a metro, etc., etc. And then we get a Sunday, and on Sunday, ideally what we do is we spend some time with our family and having a lunch or a dinner, or maybe spend some time in getting the ration for our families for the next 1 week, or take some nap because for the last 6 days we were quite hectic in our schedule, and plan for the torture of the following next 6 days. Whether we are in job, whether we are in business or in profession, the schedule seems to be seemingly similar. So that means what we are trying to do is we are trying to do a hard-earned money earning in a hope that one fine day we can find out plenty of money for ourselves so that we can retire early. But what we do is when we earn this hard-earned money, we tend to give this money to one of those persons who comes to our place and says, let me do a financial planning for you. Let me do a portfolio management for you, PMS service for you. Ideally, these people who come at our places can be a broker or a banker, but I would call them ideally a broker. Because even if it is a banker or a broker, they are coming to your place for their own vested interest of brokerage, for their own vested interest of commission, for their own vested interest of promotions, but they are not giving you any knowledge as such. And that's why I'm quite impressed with the kind of initiative which Gauravji has taken along with Institute of Chartered Accountants of India, Amitji, so that investors like us can be educated. And once we are educated, maybe these brokers and bankers, by whatever name called, whether they can call themselves as financial planners or a financial advisors or a portfolio managers, etc. Ultimately, what they are trying to do is they are trying to impress upon us so that we invest our money through them into those products where they will receive commission, brokerage, incentive, promotion, foreign trips, etc. But whether or not we get the returns or not, that hardly matters to them. So my vision, broad vision number one is maybe if we can get capable enough in managing our money, in understanding as to how to manage our money ourselves, at least we will escape from the clutches of the incentive driven or a commission driven broker or a financial advisor or a financial planner. And that's how you'll be able to make money.
while I'm speaking, I would request at least one or two amongst you to switch on your videos. Otherwise, मेरे को ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप से ही बातें कर रहा हूँ. And maybe Sumit ji या Amit ji या any amongst you, ताकि मैं किसी को तो शक्ल देखता रहूं, so that by your expressions I'll be able to understand. Okay, whatever I'm speaking is making some sense by your eyebrows going up, your eyes going widening, your maybe a bit of smile, a bit of expression of shock or anxiousness will help me to understand. Okay, I'm in the right direction. Thank you, sir. Thank you, everyone. But I don't want to feel like कि आप सारे at the same time switch on करें. आप अपने आपस में shift बांध लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं on कर लेता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद मैं off कर दूंगा. So ऐसा करके maybe you can plan amongst yourselves. So that means this whole set of money which we are earning, believing that whatever earning I'm keeping aside with the brokers, etc., they will make money for me. No, they will not make money for you. And by the realistic terms, whether it is a mutual fund broker, he is more interested for you to be investing in mutual fund. If it is a real estate broker, he's more interested for you to be investing in real estate. If it is maybe an equity broker, he's more interested for you to be investing in equities. But at the end of the day, what they are trying to do is, they say that they will be doing your financial planning, but what they are doing is not financial planning. They are actually selling you your product, their product to you, where they can earn some incentive commission brokerage. So that means at the end of the day, if the broad market does not give the return, those people who so-called come as a financial planners, they will not be able to generate money for us. And that's why a bit of little knowledge for you will help you to at least question them, that where are you investing my money and why are you investing my money, so that you are not caught in the wrong dirt. This is the broad vision number one. Broad vision number two. In India, there are a handful of people who actually work as financial advisors by charging financial advisory fees and not working as a broker. And if few amongst us can gain some knowledge and become financial advisors with in-depth knowledge, maybe we need not leave our homes to settle in metro locations. We can stay back at our places, because there is plenty of opportunity in the markets as of now, especially talking about Indian economy. So that means these are two broad visions for each one of you. Reality about the markets. So this is the second broad agenda of the day. Before we understand the reality of the markets, the GDP, which is the final value of goods and services produced in the territory of an economy in one financial year. That means the actual economy, say for example, actual economy of India is worth approximately $3 trillion. That means the final value of the goods and services produced in the domestic territory of Indian economy in last financial year was approximately $3 trillion. Although it was not exactly $3 trillion, it was approximately 2.6, but I'm assuming it to be 3. So that means $3 trillion worth of goods and services final value have been produced. So that means fundamentally the actual production or the actual economy of India is $3 trillion. And similarly, US is approximately $22 trillion. China is approximately $16 trillion. Eurozone is approximately $15 trillion. And the world is approximately $90 trillion. That means in the last financial year, the final value of the goods and services, whatever were produced in the world in one financial year, its value was $90 trillion. Okay, that's very nice. But however, there is a market. There is a huge market. This market is called as derivatives market. This derivatives market every year is approximately $1,500 trillion market. Wow. So that means the actual GDP of the world, the fundamental of the world, the actual economy of the world
is actually $90 trillion, but there is a market which is called as derivative market. I have not explained what is derivatives as of now, and I don't intend to explain derivatives as of now, but for the time being, you can understand there is a huge market, and this market is approximately 15 times the world's GDP. Wow. That means, but obvious, if this market is 15 times the world's GDP, this market will impact and is impacting the actual GDPs of the world. Oh, I have not explained what is derivatives, but what I'm trying to share with you is that if we don't understand what is derivatives market, we cannot understand the GDPs of the world, the economic policies of the world, the fundamental analysis of the companies as well. Because many of us, what we tend to do is fundamental analysis, but fundamental analysis is all about the fundamental economy, industry, company, financials, etc. But how can you do a fundamental analysis? Because that is only worth $90 trillion of economy, but the actual world's derivative market is impacting the fundamental analysis of the world. So that means if we don't understand derivatives market, even if we are doing fundamental analysis, ideally we are not doing fundamental analysis. So that means I have not explained what is derivative market, but what I'm trying to do share with you is that the power of derivative market, and for the data to understand, you can visit the website known as www.bis.org. bis.org. Now, what is BIS? Well, BIS full form is not Bureau for India Standards. BIS full form is Bank for International Settlement. You know what? You must have heard that whenever an economy's central government requires money, it used to go to IMF, World Bank. I'm saying used to go because as of now, India does not go. Earlier, yes, India also used to go. So that means if a central government of an economy needs money, they borrow this money by going to International Monetary Fund or the World Bank arm. But have you ever imagined that what if the Central Bank of India, which is RBI, if it requires money, where does it go? Because if HDFC Bank requires money, HDFC Bank will go to RBI. ICICI Bank requires money, it will go to RBI. But if RBI requires money, RBI will go to Bank for International Settlement. So that means, I'm sure you would be understanding and you would be hearing and you would have heard that Reserve Bank of India is the banker's bank in India. Oh, that means the Reserve Bank of India is the banker's bank of all the banks in India. So similarly, Bank for International Settlement is the banker's bank of all the central banks of the world. And all the central banks of the world, if they require money, they go to the banker's bank of the central banks of the world, which is known as Bank for International Settlement. And this Bank for International Settlement compiles the data from all over the world. And while compiling, this data is so huge that it gets compiled and published every 3 years. Oh, it takes so much of time to collect this data and then publish it out that it cannot be done every year. So it is done after every 3 years. And this is also known as triennial data. Triennial means after every 3 years, this data is published on www.bis.org. And there you can look at the data. The data says that the derivatives market of the world in one financial year in the recent times was approximately $1,500 trillion. Oh, that means this $1,500 trillion market of derivatives impacts the actual GDPs of the world, actual fundamental analysis of the world. So if someone says, I am doing fundamental analysis, but I don't understand derivatives, actually he cannot do fundamental analysis. It is as simple as that. Now comes bit more deeper understanding about this reality of derivatives market.
The broad agenda number 2, which I'm running through, is understanding the broad reality of the markets, broad reality as to how and what this market is being impacted by. Now, in order to make GDP has got 3 sectors: manufacturing. Sumit sir, थोड़ी एक्टिंग करते रहना कि सब समझ आ रहा है, थोड़ा यूं करते रहना ताकि मेरे को लगेगा कि हाँ समझ आ रहा है, आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपका पता है टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, मैंने ऑलरेडी अपनी टीम को बोल दिया कि इसका ना सारा जिस्ट डेफिनेटली हमारे पास रहना चाहिए। मतलब द वे यू आर एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, इट इज कैचिंग एवरीथिंग, मतलब एवरी माइंड, आई बिलीव कोई भी मिस नहीं करेगा, डोंट वरी। थैंक यू सर। थोड़ा साथ चीजें आपको पता है लाइफ में बड़ी सारी चल रही है, बट अल्टीमेटली योर पॉइंट्स आर रियली इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच जी। बस मेरे को यह है कि थोड़ी अगर ना भी समझ आ रहा हो किसी को, तो थोड़ा यूं एक्टिंग करते रहो, अगले 15-20 मिनट में थोड़ा एक्टिंग के साथ थोड़ा और समझ आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। मतलब आपने वीडियो ऑन कर रखी है, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। नाउ just going a bit deeper in the agenda number 2, what was agenda number 1, the broad vision which I have for everyone, which I discussed. The agenda number 2 is we are understanding the broad reality of the markets, and within the broad reality of the market, the important point number 1 is, conclusion number 1 within the broad agenda number 2 is derivatives market impacts the world's economies. This is point number 1. Point number 2, this GDP has got 3 sectors: manufacturing sector, services sector, and agriculture sector in all over the world. And we all know for the manufacturing to happen, or maybe for agriculture to happen, we need commodities. So commodity is the input, the raw material. Maybe we require steel, copper, iron. In agriculture, we require jawar, bajra, chini. These all commodities are impacted by the commodity markets. That means the commodity prices, the steel price, the copper price, the iron price are impacted by the commodity markets. And you know what? These commodity markets are impacted by the commodity derivatives. Oh, and you know what? Out of the total derivative market, $1,500 trillion of a market, the commodity derivative market is approximately 2%. So 2%, that means 2% of $1,500 trillion market is commodity derivatives, and commodity derivatives market impacts the commodity markets, commodity prices, and commodity prices, commodity markets impact the manufacturing sector such as automobile, steel industry, iron industry, agriculture sector. So that means the prices of the commodities impact the profitability margins of the corporates of manufacturing and agriculture sector. And have you ever imagined? We must not have imagined, but have you ever imagined that most of these corporates, if you talk about, they don't know anything about how do we do corporate commodity derivatives hedging. They are all very busy in accounting work, financial work, budgeting, reporting, financial reporting, strategic financial analysis, FP&A, but they are not customized, they are not tuned, they are not trained to understand the commodity prices which is impacting their industry. How do we protect ourselves from this commodity movement? And we cannot do commodity hedging unless and until we understand commodity derivatives, because commodity derivatives is impacting the commodity prices, and the commodity prices is impacting the manufacturing and the agriculture sector. That means the fundamental analysis. We are looking at the Maruti Suzuki balance sheet, financials, P&L, cash flow, etc. But the Maruti Suzuki raw material hedging, derivatives market, we don't understand. So how can we do fundamental analysis? So that means point number 2, commodity derivatives impact the commodity markets, and commodity markets impact the fundamental GDPs of the economy. Point number 2. Point number 3. Within agenda number 2, point number 3 now. You know what? In this globalized world, whether it is manufacturing sector, agriculture sector, services sector, they take commodities, and then after taking these commodities down, they have to take loan. That means working capital loan or term funding. They go to their banks, they need loan. Banks will go to ultimately to RBI. RBI also will give them loan. But ultimately, this whole world is moving in a globalized structure. So the money flow
ultimately is one fine day. If you look at the end of the day, it is starting with the reserve currency of the world, which is dollar, euro, pound, yen, because these are the countries which actually print money. Like dollar prints money, euro prints money, and ultimately they have the supremacy. We call them as freely convertible currency, because ultimately if India also requires money, we are more dependent upon the money coming from abroad. So that means the loans which the companies take in India to complete the manufacturing cycle, whether it is term funding in the form of external commercial borrowings or term loan or buyer's credit, or whether it is working capital like OD, CC, cash or exporters packing credit, these all type of loan, whatever loan, whether it is Indian loan, foreign currency loan, when we take from the banks, ultimately in the structure, the banks are taking from one fine day either abroad directly or through RBI, and RBI is taking through the abroad directly, the kind of funds flow coming into India. And these foreign currency loans, whole set of loans impact. That means foreign currency movements impact. That means the currency movements impact. The currency movements are being impacted by the currency derivatives of the world. That means currency derivatives impact the currency prices, dollar, euro, pound. Whether we are importer or exporter, we import, we have to pay in dollars, we export, we will receive dollars, we will receive euros, we have to pay euros, we have to receive pounds, we'll pay pound. Pound is moving, pound is fluctuating, euro is fluctuating, dollar is fluctuating, but we don't have any expertise in doing a hedging or a protection against all these movements, because every day what we are trying to do is, we are busy in our company. What to do? In our company, we are doing accounting, financial reporting, budgeting, strategic financial analysis, but we don't know these all currency prices, the currency derivatives, how they are behaving. So that means point number 3, currency derivatives of the world impact the currency prices, and the currency price movement impact the businesses, impact the GDPs of the world. Point number 3. Point number 4, with a broad agenda of 2, point number 4 is that what we are trying to do is, ultimately we are taking this loan in the form of interest rate. Even if we are not taking loan, we are taking a owner's money. Owner's money also has some cost of capital. I am sure one fine day during doing our BCom or BBA, we must have already heard about the cost of capital, cost of debt, cost of equity. So that means there is some cost of raising money. If there is some cost of raising money, that means interest rate movements will also impact our businesses. And you know what? Wow. Point number 4, or point number rather 1, 2, 3, 4 is interest rate derivatives market impact the interest rate movements, and the interest rate movements impact the businesses of the world. That means the GDPs of the world. Wow. Point number 5. Within the broad agenda 2, point number 5 is, why are the businesses doing whole set of things? Service industry, agriculture industry, manufacturing industry, they are taking commodities, doing the manufacturing, etc., etc. They are doing export, import, sales, etc. For what? For creating equity valuation. And we'll be speaking about equity share market today, because that is main agenda, investor awareness forum on equity share market. But what I'm trying to share with you is that this equity share market, the valuation of the equity share market, the output of these all businesses is ultimately the equity valuation, and this equity valuation is dependent upon the equity derivatives of the world. That means equity derivatives impact the equity price movements, the Nifty, the Sensex, Mahindra and Mahindra share, Reliance share, Maruti share, Tata Motors share, Tata Motors DVR, etc., etc. And ultimately, we are the investors in such equity shares. And you must not have imagined the few final statements. Statement number 6. Equity derivatives is only 2% of the world's derivative market. Commodity derivatives is only 2% of the world's derivative market.
And more than 90% of the world derivative market is currency and interest rate derivatives. Wow. You know what? Point number 6. Currency and interest rate derivative market, they impact the commodity derivatives, they impact the equity derivatives, they impact the commodity prices, they impact the equity prices. So if we don't understand currency and interest rate derivatives market, and we say that we are doing equity F&O, we are doing equity derivatives, boss, I don't believe that. How can you do that? It is as good as you are simply gambling. And that's why you would have heard that people who do F&O, they burn their hands and ultimately they crib market में यार पैसा बनता ही. अरे मार्केट में पैसा तब बनेगा जब रियलिटी समझ आएगी. और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है, if you don't understand currency and interest rate derivatives, the world of the market, you cannot understand equity derivatives. If you cannot understand equity derivatives, how can you play in equity derivatives? And the worst is people who trade in share market, not derivatives, I'm talking about equity market. How can they do trading or investing in share market unless and until they understand the equity derivatives? Because equity derivatives will impact the equity prices, and equity derivatives, even if they understand, they cannot understand fully unless and until they understand the currency and interest rate derivatives market, which is the world's most powerful market. And this is the final statement. Final statement is, if we don't understand currency and interest rate derivatives market, which is the 90% of the world's derivative market, we cannot understand equity derivatives. And if we cannot understand equity derivatives, and if we assume that we know equity derivatives, we definitely cannot do equity markets. And that's why you would have heard 99% people, they lose money, and the 1% people, they make money. And the reality is this 1% people are sitting to understand the currency and interest rate derivatives market of the world. Now, additional 7th statement within the broad agenda number 2, 7th statement, Sumit, and this is very important. You know what? This whole set of derivatives, I have not shared what is derivatives, but it's a market. Where can you play with this market? There are two counters. One is over the counter, and one is exchange counter. Exchange counter is like what we do in exchange, like Nifty, Sensex, etc. That means on exchange. Over the counter is when we do it with the banks. 90% of the world's derivative market is played on OTC, over the counter. So that means the real knowledge about the currency and interest rate derivatives market, which impacts the world's derivative market, which impacts the world's market, which impacts the world's GDPs. 90% of the market which impacts the world's GDP and the world's derivative market is played on over the counter. So that means the real knowledge about the currency and interest rate derivatives market is with the treasury bankers in the derivatives department of the banks. And in India, not more than 400 people, they actually have this kind of grip in the market. So that means the real knowledge of the currency and interest rate derivatives lies with the treasury bankers who are in the derivatives department of a treasury of a bank. Now, broad point agenda number 3. People who say we do fundamental analysis, they are actually at the bottom of the pyramid. You know what? How this market would have started, Sumitji? I have not explained derivatives. I'm in no mood to explain derivatives as well, because it will take some more time for me to explain derivatives, and then ultimately we'll end the day. Because ultimately what I mean to share with you, with everyone, is that we have to understand the reality of the markets. At least people will have a ray of hope, a light, कि जाना कहाँ है, क्योंकि अगर यहां जाए बगैर अगर हम वहां जा रहे हैं तो मोक्ष नहीं मिलेगा. हम योगा तो कर रहे हैं आंखें बंद करके, मगर सारे काम उसी टाइम पे याद आते हैं. वो जो अमृत चखना होगा ना योगा करते हैं, वो जो तीसरी आंख जो खुलने की बात करते हैं, या जो अंदर से जो सांस लेने की बात करते हैं, वो तब तक नहीं होगा जब तक वो निर्वाणा वाला स्टेज वाला अंडरस्टैंडिंग नहीं. एंड थर्ड agenda is, maybe I'll explain with an example how this reality of the market starts.
I'm just taking an example by the name of Mr. Trump. Why? Because Trump is no more the president of USA. So I can safely on the recorded lines, I can speak about Mr. Trump. So let us say if Trump says over Twitter, Trump was very fond of Twitter. So Trump says over Twitter, I don't like the president of Iran. He just said, I don't like Mr. President of Iran. So that means, what is the expectation in the market? Whether the oil will go up or down. Because Iran is one of the producers of oil. And if Trump is saying, I don't like President of Iran, that means US will going forward want to go against Iran. So if US is expected to go against Iran, so oil will become shortage. So oil prices will go up. Correct me if I'm wrong. As of now, Trump has not done anything. Trump has just tweeted, I don't like Mr. President of Iran. Based on his tweet, I'm sure the first person to do this tweet was Mr. Trump. So what he must have done is he must have bought oil. I'm sure raw people would be understanding it is not necessary to buy physically oil. You can do an oil future long. So that means you have bought contracts of oil. Simple. If Trump has tweeted and Trump has done bought futures of oil, so people who are known to Mr. Trump, they will also buy futures of oil. So oil price will start slowly going up. As of now, nothing has been done practically in the market. Trump has just tweeted. Trump has just shared, I don't like the president of Iran. He has just tweeted. No action has been taken. So oil prices are going up. Now what will happen? When these oil prices will start going up, there will be some market rumor coming in that there is a rumor that US might impose some sanctions over Iran. Now this rumor will come where? On the media channel. Rumor will come where? On our WhatsApp group, on our Telegram group. So what will happen? Some big players, some big speculators, they will start buying oil futures. Not the retail guy. Retail guy is just looking the media as of now because there is a rumor. And now there is a news which is flashing up. Some people coming on media channel, frontline media, YouTube channels, etc. They are saying oil is going to go up further. Oil is going to go up further. Oil is going to go up further. So the retail guy will say, oh, let me buy oil. So he'll call up his broker, Motilal Oswal or IC Securities or HDFC Securities. And even if he does not call, these all brokers will call you. Sir, oil is going up. Do you want to take a long position on oil? Sir, why don't you do a commodity derivatives in your demat account? They will say, what will happen? So they'll say, sir, oil is going to go up. Buy a long future. Everyone is buying it. See, oil has moved from 70 to 85. 70, Trump had tweeted. 70 went to 78. Then some few big people, 78 to 82. Then some rumors in the market, 82 to 85. And now people are saying in the media, YouTube channels, oil is going to further go up. So there are experts coming in. One expert is saying, sir, where do you see oil? He'll say, well, I look at $100 per barrel in the next 1 month. Oh, sir, where do you see oil? Oh, I look at $120 per barrel. Oh, wow. So retail guy will look at these all media channels. We'll look at the YouTube channels. We'll look at the WhatsApp groups. We'll listen to the brokers. And then he will buy oil at 88 and the oil will come down from 88 to 80 because then there will be a news in the market. Trump has said all is well between US and Iran. So the oil crashes. That means the news in the market is not printed, it is planted. The news is planted because the biggies, they want to get out. They want to make money. In order to get out, whom do you trap? The trap is for the retail investors because they are looking at news, media channels, the YouTube channels, the WhatsApp groups. So that means news is planted, it is not printed. And that's why the derivatives market, the speculative market started with some one big person. Have you ever imagined when Trump was the president and when he retired as a president, he made his wealth almost 5 times? Wow. Being a president, how could he have made 5 times his wealth? Simple. He did this, which I was just trying to explain you all. He did this on oil, he did this on currency, he did this on interest rate, he could have done it on LIBOR.
He did it on dollars. He did it on different underlines. So that means the reality is, what will happen is, when the retail investor ultimately gets caught, he has got two excuses to say. Sumit ji, the first excuse for a retail investor is, I am here for a long term. So he never wanted to be a long-term investor. He has been made a long-term investor by the market bashing. Market gave him such a bashing that he became a long-term investor. And the second excuse statement with this investor will say is, whenever the price will fall, now the first question which will come to his mind will be, sir, should I average? Should I take one more? So the averaging and the long-term story is the excuse for the investor who is trapped. So if someone says, nah, sir, I am here for long term, that means he's already trapped. If someone says, sir, should I average? He's already trapped. And why did he get trapped? Because he was trapped at the peak of the market when the biggies wanted to get out. The news was planted. The IRCTC was planted. The Yes Bank was planted. The Diwan housing was planted. Now, that means the third point, important point is, the people who do fundamental analysis, since they are at the last of the pyramid, so that's why you would have always heard them saying, we are here for long term. It is as good as अंगूर खट्टे हैं, आगे का तो पता नहीं है, तो जितना हमें आता है उसके वजह से हम क्या कह रहे हैं, we are here for long term. And you know what, Sumit ji, now comes broad agenda number 4. Reality about the markets from the broad reality of the markets which I discussed in agenda number 2. So I'm talking about agenda number 4 now. So in order to share agenda number 4 with the colleagues of mine, I am trying to share with you a screen as well. So this is a screen, I'm sure everyone must be able to look at it, and I am just simply typing Sensex share or Sensex price. So the Sensex price chart, I am just taking it as maximum. And in 1992, approximately, the Sensex was at around 4,000, approximately. I hope everyone can see. 4,300, 1992 April. Yes or no? Can everyone see? Sumit sir, I think you'll have to confirm it. Yes, you can see. So in 1992, Sensex was 4,300. And in 2003, it was 4,300. Right? So that means for 11 years, Sensex was flat. Wow. And suddenly, there was a sudden jump in the Sensex. So what I'm trying to explain with Sensex is ideally also true for all the shares in the market. So 1992, the share price, and the 2003, the share price, it was all flat. And suddenly there was a jump in the markets. So why was there a jump? Well, there was a jump in the market because for the first time in Indian economy, we had opened the markets. For the first time, we opened the markets. First time. Like, for example, let me sip for a while so that then I can continue a bit. For the first time, Indian economy was opened in 1991. Liberalization, privatization, globalization. But for the first time, Indian markets was opened in 2003 for the foreign investors to come into India. Since Indian economy was opened for the first time in 2003 and US was facing a dot-com bubble, the funds flow from the world started to come into India. Point number 1. Point number 2, a lot of money which was parked in the Swiss banks of the world also came back to India in the form of P notes. P notes is participatory notes. That means money coming into India, but we don't know whose money is this. We all know whose money this was.
This whole money was idly belonging to the politicians, the worthy politicians of our Indian economy who were parked in the Swiss banks of the world. And this money started to come back to India. In fact, P notes volume was so much that the 50% jump in the Sensex, that means the Sensex jump, let me show you again. The Sensex jumped from almost say 4,300 here to almost 22,500 or maybe 20,000. It was 22,500 rightly. It is not catching up the right figure. So that means 400% jump in 4 years. Wow. You know what? 50% of this jump was because of what? It was because of the P notes. That means our own money, which was parked in the Swiss banks of the world, came back to India in the form of white money, and we all know how it comes. And the remaining money was coming from the foreign institutional investors, and our Sensex moved from 4,000 to 22,500. That means 400% return in 4 years. Oh yes. If someone says, I made money before 2008, he would have definitely made money because the markets were open for the first time. So anyone who was invested before 2008, he must have made money only. So if people say, sir, I invested in 1992, 1993, you have to simply understand they did not invest with knowledge. They simply invested because there was no knowledge required then. And imagine a person waiting for the next 11 years कि कभी तो सेंसेक्स बढ़ेगा, कभी तो शेयर बढ़ेंगे. And during those times, the average FD return was 12%, सुमित जी. 12 से 14% का FD का रिटर्न था और आप सोचो सेंसेक्स फ्लैट था. तो ऐसा कौन सा आदमी होगा जो इतना इंटेलिजेंट था, इतना नॉलेजेबल था कि उसको पता था कि करण अर्जुन आएंगे और 2003 के बाद ही आएंगे. ऐसा किसी को नहीं पता था. Actually, there were lot many investors who had invested some 50,000, some 10,000, some 20,000 on experimentation basis, and some of them had left abroad, some of them have left aboard, some of them had expired, and some of them had actually moved outside India. And suddenly the young generation, their second generation, or they themselves, if they were alive, they must have realized, oh, my money has multiplied in 2008. And suddenly the mutual fund companies, the equity brokers, the media channels, they are flushed with people. They say, if you were invested from 1995 star, you would have made 120% return. Boss, show me the investor who had invested. And if there was an investor who had invested, how many? Out of 100, 3, 4, 5? No. I want at least 50% people to be investing now. You cannot find them. And did they invest with knowledge? No. They were actually banking upon one fine day something will happen. And that has happened. That has happened. It will not happen again. So if we are saying that for long term, ideally we should look at after 2008 now. Now this was 2008, 22,500. And imagine, it was again 2014, it was again 22,500. Oh, that means from 2008, see, imagine, retail investor like us cannot invest here. We get afraid here. We cannot invest at the bottom. We normally invest at the peaks. We invest at these peaks. We invest here. And suddenly there is a jump and we get out here. So the people who were invested after 2008, they had to wait. Imagine just before this 2020, what was the return? I'm talking about 2019 December, it was 41,000 Sensex. Sumit 2008 January, it was 22,500. And here it was 41,000. That means assuming 18,000 of a return, 18,000 return on base of 22,000. How much return? 90%. 90% in how many years? 11 years. What is the average return? 8.5%. What is the average FD return? 8.5%. So if 8.5% I'm getting an FD, why did I invest in so much of volatile market, blood pressure upar niche hota raha? Point is, these all retail investors who had invested before 2008, yes, they made money.
But after 2008, thank God this COVID crisis came. All those shares they were stuck with suddenly have become alive. So this is the reality for any share, any share. Let's look at the top company of Indian economy. 2008, 774. Oh, 2017, 784. 9 years, long-term investor. कभी तो करण अर्जुन आएंगे, कभी तो अंबानी साहब आएंगे, साक्षात दर्शन देंगे. Imagine, no one has the patience in the current technology world to wait for so much of time when the average FD return is 9%. So that means the concept of long term is an excuse which has been framed in the mind of the investors. So what you should do, we'll come on to that. But what I'm trying to explain you is, everyone here is, before 2008, if you were an investor, yes, you made money. From 2009 till 2019, maybe or may not. But thank God this 2021 came. घोड़े गधे सब बढ़ गए, स्मॉल कैप मिड कैप सब बढ़ गए, सारे यूट्यूब चैनल सक्सेसफुल हो गए, सारे मीडिया चैनल सक्सेसफुल हो गए. सारे लोग क्या कहते हैं, मैंने कहा था, सारों ने कहा था यार, उनके कहने के कारण नहीं बढ़ी. Market was pumped up with $32 trillion liquidity across globe. Huge liquidity into the world system made this market to flourish. But उसके बाद क्या होता है? With the kind of liquidity which has come, this liquidity has to go now. It has to go back. If the liquidity has to go back, the market will have to be volatile again, what it was between 2009 till 2019. Sumiji, during 2008 till 2013, US had printed approximately $5 trillion in 5 years. And in 2021, US has printed $10 trillion in 1 year, 1.5 years. You know what? It took 5 years for the US to print $5 trillion, and it has taken $10 trillion for only 1.5 years. The volatility is going to be now coming up. So this fourth agenda, what I was sharing here with all the investors, is to try to make you aware that while the markets are very beautiful, but there are certain things which we need to understand. And amongst various things, within the broad agenda number 4, point number 1 is that if someone shows you the return before 2008, don't believe in that return because you were not there. Rather, you should ask that person, sir, show me the live demat accounts who had invested before 2008. And at least they should be plenty in number. So writing over a star on a piece of paper and telling you, sir, if you would have invested from 1995 or 1997 and today till date, your money would have been, wow. Boss, I don't want a paper. I want a demat account statement of a live person who did it. And few in number, not 1 or 2 or 3. And if any mutual fund or a equity broker, if someone says you, sir, if you invest for long term and we have given a return, ask him the return from 2009 till 2019. And just ensure that he does not show you the return from the bottom, from here. Just ensure that he shows you the return from the peak after 2008. Why? Because if he shows you the return from here, imagine the retail investor cannot invest here. He's already so afraid he cannot invest here ever. He will always invest here, normally here. So that means normally a retail investor will invest here. So ask him to show you a return after 2009 till 2019. Why not 2021? Because it is again an exceptional year.
So the real merit कि कौन सा म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर या कौन सा इक्विटी ब्रोकर या कौन सा टीवी पर्सनैलिटी या कौन सा सोशल मीडिया पर्सनैलिटी कितना दिग्गज है जिसने रिटर्न बनाया हो 2009 से लेकर 19 के बीच में, यस, वो ढूंढना है. And when you try to find it out, you'll find out the average return for the best of the best mutual fund will not be 1.2 times or 1.1 times of the average FD return as well. What I'm trying to share is, I'm not saying that you should not invest in mutual fund or equities. You should, but with your own knowledge, and that's what the purpose of today is by the Investor Protection Fund and the Institute of Chartered Accountants of India. Point number one, don't believe in anyone who shows you the return before 2008. Believe in anyone who shows you the return between 2009 and 19, but don't let him take the bottom from the 2009. Let him take the peak of the 2009 and 2019. Don't let him include 2021 because during then everything went up only, like what happened in 2004, 2008. So that was not because of that fund manager. It was not because of that equity broker. It was not because of the advisor. It was not because of the PMS service. It was because of the markets. He did not do anything. The markets did everything. So what he did, you can only check between 2009 to 2019. Long term. Point number two. Sumiji, you know what? Long term, these all brokers, they want you to be with them because if you don't stick with long term, they lose their trail commissions. Because when you continue to be investing again and again, either through SIP or whatever, you tend to invest in the same mutual fund or equity, etc., they'll get trail commission out of it. So they don't want you to move out of one mutual fund into another. So that's also a story of long term. Point number three, Sumitji. During this 2009 till 2019, you will come to realize that not every share, हर इश्क का एक वक्त होता है. तो हर asset class का भी तो वक्त होगा ना. So that means कभी real estate बढ़ते हैं, कभी share market बढ़ती है, कभी bonds बढ़ते हैं. कभी real estate में it is 2-bedroom flat which flourishes. Sometimes it is plots. Sometimes it is commercial real estate. Sometimes it is retail booth. Within share market also, sometimes it is Infosys. Sometimes it is Maruti, sometimes it is Tech Mahindra, sometimes it is Reliance. So that means we should be churning our equities, real estate and bonds. We cannot stick with one and say, oh, Karan Arjun dobara aaye. That means we need to be churning our investment. And you can see it. I can show you a couple of examples and then we proceed further. Maybe let me show you a Maruti. Maruti. See Maruti 2009, 1640. Again 2014, 1640. Then immediately went up. See, and the highest price was what? 10,000 almost. It has still not come to that same level. See. So anyone invested here in Maruti, anyone invested here in Maruti, anyone invested here in Maruti. If you say I invested here, wow, you're a king, boss. Because at the bottom, we are so afraid, we are the retail guys, we don't invest at the bottom. And there is no media guy who's telling you to buy at bottom as well. Because the media guy in the market will say the markets will crash further. Yes, if you have the guts and the intelligence and the knowledge, if you can invest here, it's wow, here at the bottom. But normally a retail guy will buy here. He will buy here. So ideally, sometimes it is Maruti and sometimes it is Mahindra and Mahindra. See, Mahindra and Mahindra from here, 704, again 704. It was again 704. If you invested here, wow. But point is, for this you need a sheer bit of knowledge which is unique to you. Because if you are looking at media, you will buy here because media will come to tell you about Mahindra and Mahindra here. Media will always come at the top because they want to get out.
So any sort of media, whether it is social media or a frontline media, they will always come when the market is at peak because they want to get out so that they can buy again when the markets crash. Agenda number 4 finished. Now we are coming on to the agenda number 5, and I believe that this should be quite unique with you. Anjali ma'am, are we ready? Please share the screen. So I'm trying to share with you a unique concept, but for that I would request if we could stop the recording for a while, because otherwise मैं वो खोल के नहीं समझा पाऊंगा. Is it fine, Sumit ji? Can we do that? Thank you. So एक बार recording अगर off हो जाए तो हम. Thank you. सुमित जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एंड ये जो प्राइस सेक्शन है ये हमें ट्रेजरी में सीखा हमने. So when I was into ICICI Bank Treasury and I was telling about those treasury guys, so treasury in India comprises of approximately 400 people in India. So that means only a handful of people, they understand the world's derivative market, and in the world it is approximately 4,000 people. And वहां पे जो ट्रेड समझ आए उसका मैं एक झलक आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं सुमित, एंड सुमित जी के बहाने मैं सारों से शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं. यस अंजलि मैम. सो एक प्राइसिंग कैलकुलेटर का लिंक हम आपको चैट बॉक्स में भिजवा रहे हैं सुमित जी, वो आप अपनी स्क्रीन में खोल सकते हैं. वो कैलकुलेटर टेम्पररी चलेगा सिर्फ अभी के 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, बाद में बंद हो जाएगा. ये प्राइसिंग कैलकुलेटर आपको ऐसा मिलेगा. और साथ में हमने अभी फिलहाल investing.com की एक फ्री वेबसाइट पकड़ी हुई है. हालांकि मैं चाहूंगा कि जो एग्जैक्ट प्राइसेस हो आप अपने डीमैट अकाउंट में कर पाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि डीमैट अकाउंट के प्राइसेस में और investing.com के प्राइसेस में थोड़ा सा फर्क होगा. तो ये जो लेवल्स हैं जी, RCNZ, FCNZ, ये कुछ लेवल्स मेरे अपने बनाए हुए, हमारे अपने बनाए हुए, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, बट हम ट्रेजरी वालों की भाषा है. तो कुछ ट्रेजरी की भाषा में थोड़ी मैंने फाइन ट्यूनिंग R&D करी. और सुमित जी, नॉर्मली क्या होता है ना, हमारे पैकेज अच्छे होते हैं तो नॉर्मली नौकरी से कोई छोड़ता नहीं है, बट अपने को शौक था कुछ जिंदगी में कुछ अलग करने का. और अमित जी से मुलाकात हुई तो सोचा कि इकट्ठे मिलके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए भी और कुछ करेंगे. चार्टर्ड अकाउंटेंट, यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मार्गदर्शन करेंगे. तो उस पैशन के तहत हमने नौकरी छोड़ दी और फिर भगवान की तरह से फॉर्च्यून 500 कंपनीज और रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और वगैरह वगैरह उनका कुछ ना कुछ करते रहते हैं. तो इसमें से एक चीज जो है ये बड़ी यूनिक है मेरे दिल को. तो यहाँ पे ये आप यूं समझो कि कुछ लेवल्स हैं, RCNZ 1 2 3, FCNZ 1 2 3. क्या है मैं अभी वो नहीं समझा रहा, मैं आपको कुछ सीन दिखाना चाहता हूं. सीन समझो सुमित जी, आज ट्यूसडे है ना, मार्केट बंद हो गई है, मार्केट बंद हो चुकी है. तो सुमित जी, मार्केट अब बंद हो गई है, तो आज हम शाम को बैठे हैं डे एंड पे, और आज का हम हाई लो क्लोज ढूंढते हैं investing.com से. शेयर आपकी मनपसंद का सुमित जी, जो शेयर आप बोलो, रिलायंस बोलो, L&T बोलो, जो पसंद हो. F&O का हो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें लिक्विडिटी होती है. I think general information के लिए I believe we can start with Reliance only. Reliance. That is common to all. डन है जी. तो रिलायंस का शेयर एक बार लेते हैं जी. रिलायंस का शेयर का आज का प्राइस यहां से हम देख सकते हैं, स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूं, एंड आप अपने अपने लैपटॉप पे भी स्क्रीन खोल लेंगे तो फिर ताकि हम थोड़ा और 1-2 एग्जांपल्स का मैं स्पीड अप कर पाऊंगा आपके साथ. तो रिलायंस का शेयर का प्राइस आज का हाई 2388, आज का लो 2306, यानी कि हाई लो क्लोज डाल रहे हैं सुमित जी हम आज का. तो हम यानी कि ट्यूसडे शाम को हमें हाई लो क्लोज रिलायंस का पता है, और वो हम यहां पे कैलकुलेटर में डाल रहे हैं. सो कैलकुलेटर में डाल के मेरे को 1 सेकंड देना सुमित जी, वो ना लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, एक बार उसको चार्ज पे लगा दो. 1 मिनट देना.
हाँ जी, आई एम बैक। तो तब तक वो ओके। तो अब सुमित जी ऐसा है, हमने हाई लो क्लोज आज का डाल दिया और हमने कल के रेंज ऑफ प्राइसेस पहले से फोरकास्ट कर दिए हैं जी। तो सुमित जी हमने क्या किया, हमने आज के हाई लो क्लोज डे एंड पे हम सारों को पता लग ही जाएंगे, हमने उसके बेसिस पे कल के प्राइसेस को फोरकास्ट कर दिया है। अब फोरकास्ट क्यों किया है? अब फोरकास्ट इसलिए किया है क्योंकि कल यानी कि वेडनेसडे को पहले 15 मिनट, फर्स्ट 15 मिनट 9:15 से 9:30 के बीच में हम ये देखेंगे कि रिलायंस का जो हाई है क्या वो आरसी एनजेड 1 से ज्यादा है। आरसी एनजेड 1 का प्राइस क्या है? 2382.68, मगर 2404.32 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनके बीच में होना चाहिए। अगर इनके बीच में ना सुमित जी, तो वो कल ही आने वाले 1-2 घंटे के अंदर वो एफसी एनजेड 2 और 3 के बीच में आएगा, 10 में से 9 बार आएगा। यानी कि कर्सर आपको दिखा रहा हूं मैं साथ साथ, एफसी एनजेड 2 का मतलब 2353 और 2341 तक आएगा। कब आएगा? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कल पहले 15 मिनट का जो हाई है रिलायंस का वो अगर 2382.68 से ज्यादा होगा मगर 2404.32 से ज्यादा नहीं होगा, यानी कि वो कहां खुलेगा? हम बोलेंगे आरसी एनजेड में खुला है, आरसी एनजेड में खुला है। तो अगर आरसी एनजेड में खुला है तो हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं भाई अगर 15 मिनट में अगर वो आरसी एनजेड में खुला है तो आने वाले 1-2 घंटे के अंदर कल ही वो एफसी एनजेड 2 और 3 के बीच में आएगा। वाइस वर्सा सुमित जी, अगर कल का रिलायंस का लो एफसी एनजेड 1 से कम है, 2363.32 से कम है, मगर 2341.68 से कम नहीं है, यानी कि इसके बीच में खुला पहले 15 मिनट में, तो हम क्या बोलेंगे? कहां खुला? हम कहेंगे एफसी एनजेड में खुला। तो अब आप बोलो सुमित जी, अगर एफसी एनजेड में खुला पहले 15 मिनट में तो कहां जाएगा आने वाले 1-2 घंटे में? वो जाएगा आरसी एनजेड के 2 और 3 के बीच में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने क्या किया? हमने आज का हाई लो क्लोज रिलायंस का लिया, हमने उसको हाई लो क्लोज को हमने डाल दिया कैलकुलेटर के अंदर, उसके बेसिस पे हमने कल के प्राइसेस की एक रेंज बना ली। पता है क्यों बनाई रेंज? हम ये देखना चाहते हैं अब ये कहां खुलेगा, और कहां खुलेगा से ना हम ये बता रहे हैं कि कहां खुलेगा वो तो मार्केट ने बताया, मैं यहां खुल गई, और हम कह रहे हैं अब ये कहां जाएगी, ले पहले ही बताता हूं। यानी कि कहां जाएगी पहले बता रहा हूं मैं, खुलने के बेसिस। खुलना कब? 15 मिनट में। 15 मिनट में क्या होना चाहिए? आरसी एनजेड 1 से ज्यादा हुआ खुला हो, यानी कि 2382.68 से ज्यादा खुला हो, और 2404.32 से ज्यादा ना हुआ हो पहले 15 मिनट में। तो हम क्या बोलेंगे? कहां खुली? आरसी एनजेड में खुली। अगर आरसी एनजेड में खुलेगी तो कहां जाएगी? वो अगले 2-3 घंटे में ना उसी दिन यानी कि वेडनेसडे वाले दिन ही एफसी एनजेड 2 और 3 के बीच में जाएगी सुमित। और अगर वाइसा वर्सा, अगर वो पहले 15 मिनट में जो उसका लो है अगर 2363.32 से कम हुआ मगर 2341.68 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब उसके बाहर ना जाए, यानी कि एफसी एनजेड में खुल जाए, यानी कि एफसी एमजेड में ना जाए, एमजेड यानी कि मुंबई जोन में ना जाए, एमजेड के अंदर ना एंटर करे, एनजेड में जाए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे दिखाना अंजलि मैम। एमजेड और डब्ल्यूजेड, वाइट जोन, मिड जोन, नैरो जोन, 3 जोन है हमारे पास। टाइम की पॉसिटी के कारण मैं सिर्फ एक ही जोन में एक चीज छोटी सी बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या कोशिश करी कि अगर आरसी एनजेड में खुलता है पहले 15 मिनट में तो आने वाले 2-3 घंटे के अंदर ही, या समझो उसी दिन वेडनेसडे वाले दिन ही, वो एफ सी एनजेड 2 और 3 के बीच में जाएगा, 10 में से 9 बार जाएगा। और अगर वो एफ सी एनजेड में खुलता है तो वो आने वाले घंटों में उसी दिन में वो आर सी एनजेड 2 और 3 के बीच में जाएगा। ठीक है सुमित जी, अब इसको खेलते हैं।
तो खेलने के लिए हम थोड़ा हिस्टोरिकल फिगर्स, आप जो दिन बोलो, जो दिन बोलो, दिन आपका, महीना आपका, आप बताइए उस दिन। बस ये है कि मैं सिर्फ फटाफट ये चेक कर लूंगा कि वहां पे खुला ही नहीं खुला, क्योंकि अगर वो कहीं और खुलाएगा उसका बिहेवियर मैंने अभी आपको सिखाया नहीं। एक्चुअली कोविड लेवल ले लेते हैं, लेट्स से मार्च 20। अच्छा, इतना पीछे जाना चाहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, मार्च 2020 में चलते हैं। तो मार्च 2020 में तारीख बताइए जी। आई थिंक 19th। अच्छा, बट वो एक्सेप्शनल हो जाएगा, सो वी नहीं कैन नहीं टेक। नहीं नहीं नहीं, कोई एक्सेप्शन का इशू नहीं है। अच्छा, ओके। एक्सेप्शन का इशू नहीं है, बस ये खुली वहां होनी चाहिए जो बीच में जो जोन है, बस। 19th मार्च। 19 मार्च लेते हैं, बस देखते हैं कि वहां पे उस दिन खुली कहां थी, बस वो देखते हैं एक बार। तो 19 मार्च को हम हाई लो क्लोज लेते हैं। 19 मार्च 2020। हाई लो क्लोज डालते हैं। अंजलि मैम आपको डालना पड़ेगा, मैं साथ साथ सिस्टम खोल रहा हूं दूसरे वाला। हाई लो क्लोज उस दिन का, यानी कि 19 मार्च का, हम देख रहे हैं ये कि वहां खुला कहां। अब ये सुमित जी, ये 20 मार्च की हमारे पास जोन आ गई है। अब 20 मार्च के पहले 15 मिनट हमें देखना है कि उसका हाई कहां है और उसका लो कहां है, यानी कि फर्स्ट 15 मिनट्स का हमें ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट 15 मिनट्स के लिए हम 15 मिनट्स का मिनट बाय मिनट कैंडल लेंगे, क्योंकि हमें यह देखना है कि उसका हाई क्या था और उसका हाई किसके ऊपर होना चाहिए वगैरह वगैरह, वो हम देख रहे हैं। और उसका लो क्या था, उसका लो जो है किसके नीचे होना चाहिए, वो हमारी बात। अंजलि मैम मेरे को 2 मिनट देना, मैं यहाँ पे लॉग इन कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। हाँ जी। So, Amanji, this calculator has been designed for treasury people only. ये मैंने जी इसमें थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करके, हमारे कुछ लोग होते हैं जिनको मैं इसके ऊपर एजुकेट करता हूं, इसको मैं बोलता हूं पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस। तो मैं हैंड होल्ड करके एक तरह से सिखाता हूं साथ साथ, कि आप समझो कि मार्केट कितनी हसीन है। अगर आपको समझ आ जाए तो मजा आ जाए जिंदगी का। तो वो कोशिश है। That's because it is already planned, or it works because of some fundamental thing, I mean, which you have installed in your calculator. प्राइस है जी, प्राइस हैज द बेस्ट इंफॉर्मेशन। ट्रंप साहब जब कुछ करेंगे तो किसको सबसे पहले पता होएगा? ट्रंप को। अगर ट्रंप को पता है तो क्या मार्केट में प्राइस है उसका? जो ट्रंप ने किया, ट्रंप किसके ऊपर खेल रहा है? ऑयल के प्राइस के ऊपर। ट्रंप के जो आसपास वाले लोग हैं किसके ऊपर खेल रहे हैं? प्राइस के ऊपर। तो सबसे पहली पकड़ मार्केट में क्या होगा, किसको पता होगा? प्राइस को। जैसे आपने बोला डेरिवेटिव का, तो डेरिवेटिव जो है वो तो मतलब एक फ्री टूल है, तो क्या कैलकुलेटर उसको हर बार डेरिवेटिव को काउंट कर सकता है? देखो जी, डेरिवेटिव भी अल्टीमेटली किसी प्राइस के ऊपर है ना, किसी प्राइस का मूवमेंट है ना। राइट। वो जो प्राइस है, प्राइस को सबसे पहले पता है। जब प्राइस को सबसे पहले पता है तो नॉर्मली प्राइस के बेसिस पे ही तो लोग क्या करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। यस, बराबर है ना? राइट। यानी कि टेक्निकल एनालिसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट? प्राइस।
मगर क्या है कि टेक्निकल एनालिसिस में लोग कैंडल को देख के नहीं कर सकते, कैंडल के पैटर्न्स देखेंगे, एनगल्फिंग, हेड एंड शोल्डर या आरएसआई देखेंगे। पॉइंट ये है, ये सब टेक्निकल एनालिसिस कोर्सेज सब चोचले बन चुके हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो प्राइस था ना, वो प्राइस सबसे पहले बताता है। आप समझ रहे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं? So that becomes a law in a way. मतलब वो हर बार स्टैंडर्ड अपने रिजल्ट्स देगा, स्टैंडर्ड अक्रॉस मार्केट। आप बोलो एप्पल गूगल हो, उसके ऊपर भी देगा। अक्रॉस कमोडिटीज, आप बोलो गोल्ड सिल्वर, उस पर भी देगा। ओनली पॉइंट इज लिक्विडिटी इन दैट अंडरलाइंग होनी चाहिए। आप बोलो कि कोई ऐसा शेयर जो मैंने सुना ही ना हो, मैंने, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देयर हैज टू बी लिक्विडिटी, मतलब देयर शुड बी ट्रेडर्स, देयर शुड बी स्पेकुलेटर्स इन दैट। ओके, स्पेकुलेटर मतलब डेरिवेटिव स्पेकुलेटर, यानी कि F&O, राइट। ठीक है ना? मेरे को 2 मिनट देना बस, एक्चुअली प्लीज रीलोड हो रहा है। तो तब तक अगर किसी के सवाल है बाई चांस अब तक जो हमने देखा है, तो मे बी दे कैन pour in their questions. Aman sir, हाँ जी, some question has been came in our portal. हाँ जी, हाँ जी। तब तक हम क्वेश्चन ले सकते हैं साथ साथ, तब तक क्वेश्चन ले सकते हैं जब तक वो सिस्टम एक बार रिव्यू हो। That one first question is how safe investigating in shares for long term return with borrowed amount? सबसे पहले तो सर, it is necessary for us to understand that there is nothing like long term. This is only been imposed in our minds. Long term, by choice, we are not investor. We are forced to be in long term. Why we are being forced? Because the other person wants you to be in the market so that he earns commission and brokerage out of you. Point number 1. Point number 2, since you might have invested at the higher amount and the market has corrected, so you have got no choice. Under compulsion, you are into long term. Sir, second question, one Mr. Jagrat from Hyderabad. He's asking, sir, what do you think is the start point for a person who wants to learn trading on derivatives for a living? See, starting point जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं, I think price action will help him understand quite a bit. But क्या होता है कि before we start anything, I think it is not about only learning. It is about personal belief system and the personality change also. Let me give you an example. If I tend to make someone learn, I think it is not about learning as to what to do. It is about changing his personal belief system, what he believed about the market. So first of all, I have to change his perception about the market, which takes a bit of time. And then the learning, the actual learning will impact his mind. यानी कि पहले जो उसने सीखा हुआ उसको अनरीड करना पड़ेगा. And then जो नया है वो उसको रीड करना पड़ेगा, फिर उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. हर किसी को रिटायर मार्केट में होना है, मगर हर किसी को जल्दी आज ही कमाने की. So I think first of all, before we start investing, it is about first of all gaining knowledge in the market, and the knowledge has to be unique. When I say unique, it cannot be acquired from a book, it cannot be acquired from a YouTube channel, it cannot be acquired from a media channel, it cannot be acquired from a course. कोर्स भी क्या होगा? 6 दिन का कोर्स, 10 दिन का कोर्स करने के बाद क्या बाय बाय हो गया ना? So that means it has to be a continuous process. So yes, if it is a continuous process and you're able to, let us say, understand it, change your nature, change your personal belief system, it can be a wonderful living as well. Yes, that's very wonderful answer. And another one, madam, is Ms. Rucha from North Goa. Same, I think you already answered the same. As a CA fresher, we know basics of derivatives, theoretical, but no knowledge beyond that.
So how to approach it? I think you already explained more or less. First of all, वो जो basics है ना sir, that basics you believe that you know, but as I mentioned, from where did you read those basics? You read those basics from a theoretical book which was not written by a treasury banker. So I'm not saying you read my book. What I'm trying to share is that anyone who reads derivatives की definition क्या है? Derivatives are contracts which are based on one or more underlying asset. अब दिल से पूछो मतलब क्या, ये तो बता दे. सही है, right. मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हो जिंदगी में, वन और मोर कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन वन और मोर अंडरलाइंग एसेट. तो फिर मेरे से एक बार ट्रेनर ने मेरे से पूछा, जब मैंने ट्रेजरी में ज्वाइन किया, उन्होंने कहा कैन इट बी अंडरलाइंग लायबिलिटी. मैंने कहा ये तो पढ़ा ही नहीं कभी जिंदगी. सो आई थिंक once you say that you understand basics, maybe you need to recheck again because you believe that you understand basics. Yes. One madam from Sandhya Bhatia Kumar from Udaipur. What option other than mutual funds do passive small investors have if not through a broker? Okay, फिर मेरे को लगता है कि ये this is very important question. Maybe we'll do this price वाला sometime next, क्योंकि ये भी बड़ा important चीज है. तो इस पे मैं शायद यूं करने की बात करता हूं. Let's try to understand mutual fund first of all. Mutual fund is a wonderful big broker who has made his reputation through the media channel into our minds. Mutual fund पैसा कहां लगाते हैं? In equity and bonds. And ultimately, mutual fund is a very big broker who has positioned himself on media channel in such a manner कि क्या हुआ? In starting, when this market flourished, a few people became traders in the market. Suddenly, they lost money in the market. So what these all companies, the big broking houses, the big bankers, they came into the media, they said, oh, you were a trader, you lost money. Oh, market is very risky. Why don't you come in mutual fund? Mutual fund is not risky. आइडली म्यूचुअल फंड कहां लगा रहे हैं? शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, वो भी तो रिस्की है. मगर उन्होंने पोजीशन क्या किया? यू आर अ ट्रेडर, यू डोंट वांट रिस्क, कम इन म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड सही है. इट्स अ वंडरफुल एडवर्टाइजमेंट, बट पॉइंट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज द रिस्क कंपोनेंट ऑफ द म्यूचुअल फंड इज सेम और समटाइम्स मोर देन अ इक्विटी. नॉर्मल जितने भी म्यूचुअल फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो 20% से ऊपर होता है. 20 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या है? रिस्क. ये बात अलग है, हम रिटर्न तो करते हैं, कभी रिस्क कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं करी. हमारे लिए रिस्क क्या होता है? रिस्क का मतलब होता है हाई, लो, मॉडरेट. ऐसे थोड़ा ना होता है. फिर तो रिटर्न को भी ऐसे कर देते हैं, हाई, लो, मॉडरेट. सुमित जी से मैं पूछूं, सुमित जी कितना रिटर्न लोगे? वो कहते हैं हाई. उनका हाई मेरा मॉडरेट हो सकता है. मगर सुमित जी ने क्या बोला? मेरे को 15% चाहिए. मैंने फिर सुमित जी रिस्क कितना लोगे? वो कहते हैं नॉर्मल कर देना. नॉर्मल कैसे कर देना? सर मेरे को परसेंटेज में बताओ. तो सुमित जी ने कहा परसेंटेज में रिस्क थोड़ा ना बता सकता हूं. क्यों? रिस्क स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके मेरे को परसेंटेज में बताओगे तभी मैं बताऊंगा ना कितने रिस्क पे कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड हो सकता है. बिकॉज पॉइंट ये है, हर कोई क्या कहता है? सर रिस्क नहीं लोगे तो रिटर्न नहीं आएगा. अरे मैं तो कुछ और बोल रहा हूं. हायर द रिस्क, हायर इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्चुअल रिटर्न कैन बी नेगेटिव ऑल्सो. मगर हमारे दिमाग में क्या डाला जाता है? हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न. नो 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 नो, हायर द रिस्क, हायर द रिटर्न नहीं होता है. हायर द रिस्क, हायर द एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है. एक्चुअल रिटर्न कैन बी नेगेटिव होता है. तो इसका मतलब ये, while there was a lot of risk in equity market which was shown on the media houses, what they did was they immediately said कि सर मीडिया हाउस में ना बड़ा रिस्क है. मीडिया हाउस में कहां रिस्क है? शेयर मार्केट में. तो मीडिया हाउस ने क्या कर दिया साथ में? सर म्यूचुअल में लगा लो, वहां पे रिस्क नहीं है. क्यों? वहां पे हमारे पास नॉलेजेबल लोग हैं, एक्सपर्ट हैं, टाइम है. आपके पास टाइम नहीं है, आप आ जाओ. नॉलेज नहीं है, आ जाओ. एक्सपर्टीज नहीं है, आ जाओ. लगाओगे कहां यार, ये तो बताओ. शेयर मार्केट में तो लगाएंगे, बॉन्ड में तो लगाएंगे. तो भाई मार्केट में तो रिस्क है ही है ना. सो दैट मींस पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन इज म्यूचुअल फंड इज आल्सो ब्रोकर. एंड इफ यू आर सेइंग कि मैं म्यूचुअल फंड में लगाती हूं या लगाता हूं, क्या वो सही है? तो पॉइंट है म्यूचुअल फंड कहां लगा रहा है. अगर जहां लगा रहा है तो एक सिंपल थॉट प्रोसेस, टॉप 5 म्यूचुअल फंड पकड़ो, उनके कॉमन शेयर्स निकाल लो और उन्हीं में लगा दो सिर्फ. समझो टॉप 5 म्यूचुअल फंड. अब आप कहोगे कहां से मिल सकते हैं? गूगल कर लो टॉप 5 म्यूचुअल फंड. गूगल से पूछो, गूगल में क्या कहेगा? क्रिसिल कहेगा कुछ और,
मॉर्निंग स्टार कुछ और कहेगा, तो टॉप कॉमन 5 निकाल लो। उन कॉमन 5 म्यूचुअल फंड के कॉमन शेयर्स निकाल लो 5, उसमें खुद ही लगा दो। नहीं समझे सर? तो पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसा करना जान जाएं, सीख जाएं, तो क्या क्या फायदे हैं, मैं उसके ऊपर कंक्लूड करता हूं म्यूचुअल फंड वाला सवाल। पॉइंट नंबर 1, आप कमीशन ब्रोकरेज बचा रहे हैं एटलीस्ट 1%। पॉइंट नंबर 2, किसी भी म्यूचुअल फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है ना, वहां पे लिखा होता है 2% के करीब होती है, 2% आपके और बच गए। पॉइंट नंबर 3, एसेट मैनेजमेंट फीस वो भी बच गई। पॉइंट नंबर 4, आपको बोनस और डिविडेंड जो उस शेयर पे आएगा ना, आपके घर तक आएगा, म्यूचुअल में नहीं आएगा, क्योंकि हमने म्यूचुअल कौन से लिए होते हैं, हमने लिए होते हैं ग्रोथ फंड, उसमें आता ही नहीं। मगर बोनस डिविडेंड अगर आप शेयर में लगाओगे तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। पॉइंट नंबर 5, म्यूचुअल फंड ब्रोकर आपका कभी भी म्यूचुअल फंड चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको ट्रेल कमीशन आएगा। पहले क्या होता था, पहले उसको अपफ्रंट कमीशन आता था, कभी कभी चेंज कर भी देता हो, मगर अब तो पक्का चेंज नहीं करेगा। क्यों? उसको ट्रिल कमीशन आएगा। अब आप सोच सकते हो सेम म्यूचुअल फंड कभी चलता है क्या? एक जमाना पहले एचडीएफसी टॉप 200 चलता था, जिसका नाम एचडीएफसी 100 बन गया। कब चलता था? 2008 में। फिर 2012-14 में कौन सा चला? मोतीलाल ओसवाल का मोस्ट 35। फिर 2018 में कौन सा चला? मिराय एसेट। 2020 में कौन सा चला? एक्सिस का ब्लू चिप। अब सोचो, आज भी कई लोग ऐसे हैं जो एचडीएफसी टॉप 100 में लगा रहे हैं। क्यों? उनका ब्रोकर चेंज ही नहीं करता। क्यों नहीं चेंज करता? रीजन सिंपल है, क्योंकि उसको ट्रेल कमीशन नहीं आई। और एक और तरीका है सर, हम म्यूचुअल फंड में एक पर्टिकुलर तारीख को सिप लगाते हैं ना, ऑन वन पर्टिकुलर डे। सो व्हाई डोंट वी डू वन थिंग, हम जब इस पर्टिकुलर तारीख को लगाते हैं सुमित जी, तो क्या हम इंश्योर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर तारीख को ही मेरे को अच्छा एवरेज मिलेगा? क्या आपका फ्लैट ही थी मार्केट, तो हम तो और एक्यूमुलेट करिए रहे। या तो एक तरीका कर लो, हर रोज लगाना शुरू कर दो, ताकि एवरेज तो हो। सिप का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ताकि एवरेजिंग सही हो जाए। तो ऐसा भी कर सकते हो सुमित जी, टॉप 5 म्यूचुअल फंड के टॉप 10 कॉमन शेयर्स निकाल लो। उन टॉप 10 कॉमन शेयर्स में आपका जो मंथली सिप का अमाउंट है, उसको 4 हफ्तों में बांट दो। पहले हफ्ते में लगा दो, फिर देखो अगले हफ्ते में कौन से शेयर 5% टूटे, उसमें और लगा दो। थर्ड हफ्ते में कौन से शेयर और टूटे, उसमें और लगा दो। जो ऊपर बढ़े उसमें भी लगा दो, यानी कि ताकि एवरेजिंग तो हो। जो वहीं पे खड़े में उसमें मत लगाओ, तो आपका कॉस्ट जो है बेटर आ जाएगा। आई होप आई कुड आंसर द क्वेश्चन। इसमें साथ में अमन जी ये और आप बताओ आईपीएफए की तरफ से कि अगर कुछ इनिशियली लोग एंटर करते हैं मार्केट में, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे और आईपीएफए का पर्पस है कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए जागें, तो जहां मार्केट्स के अंदर वो इन्वॉल्व हों, बहुत इनिशियल स्टेज पे उनको स्टार्टिंग के लिए बहुत छोटा सा क्या स्टार्ट करना चाहिए, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ना करें। जैसा अभी हमने जो डिस्कशन किया, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्कशन, जो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन देगा जो ऊंचे लेवल पर अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट जो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ इनिशिएट करते हैं अपना प्रोसेस, उनके लिए कोई बहुत छोटा सा एक आपका गुरु मंत्र सॉर्ट ऑफ। इसमें कुछ क्रक्स लेते हैं जी। पॉइंट नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट, स्टिक विद द लार्ज कैप। हिंदुस्तान डूबे तो वो शेयर्स डूबे। किसी भी आम आदमी से पूछो कौन से ऐसे 10 शेयर हैं जो आपके नाम पे आते हैं जो हिंदुस्तान डूबे तो शेयर्स डूबे, तो आप कहोगे यार सबसे पहले तो एचडीएफसी बैंक समझ आता है, रिलायंस समझ आता है, इन्फोसिस समझ आता है, एचसीएल टेक समझ आता है, मारुति समझ आता है। यानी कि पहले मैं अपना रिस्क को बचा रहा हूं, मैं पहले अपने कैपिटल को बचा रहा हूं कि अगर खुदा ना खास्ता मेरे को लॉन्ग टर्म फंस भी जाऊं मैं, तो मेरे को नींद तो अच्छी आए। और वो नींद अच्छी आने के लिए जो टॉप 10 जो लार्ज कैप आपके दिमाग में आते हैं, किसी भी मीडिया चैनल को सुनने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में आप डे टू डे रूटीन में जो आप कहते हो टॉप 10 ये दिखते हैं यार, उसमें लगा दो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो जो टॉप 10 है उनको, जैसे मैंने अभी आपको हिस्टोरिकल चार्ट दिखाया रिलायंस का, मारुति का, एक बार देख लो कि यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं ना, कुछ कुछ तो बढ़ रहे हैं ना, डूब तो नहीं गए हैं ना, टाइगर जिंदा है ना। तो अगर वो टाइगर जिंदा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक हिंदुस्तान जिंदा है तो वो भी जिंदा रहेंगे टाइगर। यानी कि एशियन पेंट जिंदा है, हाँ है। उसने क्राइसिस देखा था 2008 का, हाँ देखा था। फिर 2014-15 का क्राइसिस, 15-16 का चाइना क्राइसिस देखा था, हाँ देखा था। 2019 का बॉन्ड क्राइसिस देखा था, हाँ देखा था। 2020 का क्राइसिस देख लिया, हाँ देख लिया।
जिंदा है, हाँ जिंदा है, लगा दे यार, ठीक है। एशियन पेंट्स है, नेस्ले है, रिलायंस है, जिंदा है ना, रिटर्न नेक्स्ट लेवल पे आता है। पहले तो मैं सेफ गार्ड, क्यों मैं आज ऐसी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं आज इसलिए ऐसी बात कर रहा हूं क्योंकि 2021 में जितना पैसा छपा है अब वो वापस जाएगा, रिटर्न ऐसे ऐसे होगा, मार्केट वॉलेटाइल होगी। तो अगर कई लोग ऐसे बैठे हैं ना, यार 25% तो मांगता है, क्यों? क्योंकि 2021 में आया था, अब नहीं आएगा। पहले तो एक्सपेक्टेशन को लोअर कर लो। 20-25% 20-21 में इसलिए आया है क्योंकि 20-21 में सारे घोड़े गधे सब भागे, और वो किसी फंड मैनेजर के कारण नहीं भागे। नॉर्मल रिटर्न कितना आएगा? वही तो जो 2019 9 से लेके 19 आया था। कितना रिटर्न था? अब तो आपको थोड़ा बहुत तो सिखाई दिया, कैलकुलेट करना शुरू कर दो। 2008 के पीक का शेयर पकड़ लो, या 2009 का पीक का शेयर पकड़ लो, और 2019 का बॉटम पकड़ लो, और आपको पता लगेगा नॉर्मल रिटर्न ही आया। उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देना, 11 साल से, जैसे हमने सेंसेक्स किया। अगर कोई चाहता है तो मैं एक आधा शेयर पकड़ के और कर दूंगा दोबारा। फिर उसके बाद आता है कि अब वो जो शेयर्स का पोर्टफोलियो है, उस शेयर्स के पोर्टफोलियो में सुमित जी हम आज ना लगाएं इकट्ठे। यानी कि 10 शेयर हिंदुस्तान डूबे तो शेयर हमने आइडेंटिफाई कर लिए, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं कि भैया सर मेरे पास ना दो कैटेगरी ऑफ पीपल हैं। एक है सर मेरे पास ना 30 लाख रुपए, लगा दूं? भाई 30 लाख रुपए है ना, ऐसा कर 3 हिस्से में बांट दे। 10 लाख रुपए को इन 10 शेयर में आज लगा दे, आंखें बंद करके लगा दे। हमें पता ही नहीं कि क्या होगा, अज्यूम कि हमें कुछ नहीं आता। अगले 10 लाख कब लगाने हैं? भगवान करे यहां से मार्केट 10% टूट जाए, प्रे कर, तो डरियो मत, 10 लाख रुपए लगा। और अगर ऊपर बढ़ गई तो कोई बात नहीं, वो जो 20 लाख है ना उसकी एफडी करवा के बैठ जाए, 10 लाख के ऊपर प्रॉफिट कमा ले। पॉइंट ये है, इसका मतलब ये कि हम लमसम में क्या करते हैं, आज ही लगा देते हैं। फिर नीचे जाते हैं हम, फिर एवरेज करने के लिए पैसा ढूंढते हैं। दूसरी तरह के लोग कौन है? जिनके पास कट्ठा पैसा नहीं है सुमित, जिनके पास हर महीने 50,000 आएगा, हर महीने 1 लाख आएगा। वही 10 शेयर को 4 हफ्तों में बांट दो पैसा। समझो 4 हफ्तों में आपका लाख रुपए, 25,000 रुपए हर हफ्ता लगाना शुरू कर दो, ताकि आपका सिप हो जाएगा। और ब्लाइंडली मत लगाना, उसमें जो शेयर 5% टूटा लगा लो, 5% ऊपर गया लगा लो, एवरेज करते रहो, उसकी सिप बनाते रहो, सिप बनाते रहो, ये वेल्थ बनता रहेगा, वेल्थ बनता रहेगा, वेल्थ बनता रहेगा। म्यूचुअल फंड में तो यही कर रहे थे। ब्रोकरेज बचाई आपने 1%, 2% का एक्सपेंस रेशियो 3% हो गया, 1% तो थके से थका कंपनी भी डिविडेंड दे देगा, 4% ये हो गया। एसेट मैनेजमेंट फीस मान लो 1%, 5% तो वैसे ही कहीं नहीं गए, 5% तो वैसे ही ज्यादा आ गया आपको। ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट सुमित जी। अब आते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट के बाद फिर थोड़ी थोड़ी हम जो कमाई कर रहे हैं, जो समझ लेने के लिए फिर वहां पे जाएं। अब वो समझ लेने के लिए बट ऑब्वियस एक रूट हो सकता है, हम धीरे धीरे करके उसको कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम प्रोग्राम बना सकते हैं। मगर उसमें एक स्टैंडर्ड चीज है जो मैं कहना चाहता हूं, आप जहां मर्जी जुड़ें, ये सोच के जुड़ें। पॉइंट नंबर 1, किसी किताब से कोई अमीर नहीं बन सकता। वॉरेन बुफे साहब ने जो किताब लिखी है, किताब बहुत बढ़िया है, मगर उससे कोई अमीर नहीं बन सकता। क्यों? अरे भाई, वॉरेन बुफे साहब ने जब लगाना शुरू किया था, और आज का युग डिफरेंट है। पहले आदमी के पास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, वो हर रोज नहीं देखता था शेयर मार्केट कहां है, शेयर मार्केट कहां है, सो जाता था अगर ऐसा होता था आदमी। तो आज के हम हर रोज देख रहे होते हैं मार्केट कहां है, मार्केट कहां है, मार्केट कहां है। दूसरा, कोई भी यूट्यूब चैनल जो फ्री वाले हैं, उनसे आप अमीर नहीं बन सकते, उनसे इन्वेस्टमेंट मत करना, उनको बेचारों को खुद नहीं आता। इसलिए तो रियलिटी बताई थी डेरिवेटिव्स मार्केट की। तीसरा, मीडिया बंद कर दो, क्योंकि मीडिया देखोगे तो आखिरी में आप ही फंसोगे। जब ये 3 चीजें आप, मां बाप जब बच्चे बड़े करते हैं ना, पालते हैं, तो क्या कहते हैं, बेटा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। वो हमेशा क्या कहते हैं, ये नहीं करना, क्योंकि बाकी उसको पता है कि बाकी सही कर लेगा। तो मैं भी यही कह रहा हूं, वो मत करना, वो मत करना, वो मत करना। तो अगर मैं नहीं करना वाली लिस्ट कर दूंगा ना, तो क्या करना आपको खुद समझ आ जाएगा। क्योंकि जो बाकी 99% जो लोग गवाते हैं ना, वो वही करते हैं जो नहीं करना। तो यानी कि आई थिंक दिस जर्नी कैन बी प्रोग्रेस इन दिस मैनर, सुमित जी। Sir, when Mr. Manoj Jaiswal is asking, sir, is selling options are better and safer than trading in future? ये तो खतरनाक है, बिना ऑप्शन डेरिवेटिव समझे। मेरे को एक बार ये बताओ सर, जो सवाल पूछ रहे हैं, हमारे पास समय कितना है? मैं अगर 15-20 मिनट में जो प्राइस एक्शन दिखा रहा था वो दिखा दूं थोड़ा सा, या नहीं? अगर नहीं, फिर हम आराम से सवाल ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। Sir, up to 5, sir, we have time. 5 तो मैं नहीं दिखा सकता, फिर कोई बात नहीं, फिर सवाल ही लेते हैं, फिर 20 मिनट जो है हम सवाल लेते हैं, कोई इशू नहीं।
Sir, how can we gain such unique knowledge as a beginner? Amaravati. वही सेम क्वेश्चन है सर. Same question, sir. Obviously. Dear sir, namaste. Have not entered into stock market and invested so far. Can I do now and start investing? Why I am asking, the market is already high. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का दूसरा मुद्दा है जी. सुमित सर, पहला मुद्दा था कि जो लगा रहे हैं वो संभल जाएं, क्योंकि हर आदमी जो लगा रहा था ना, वो 30 मार खा समझेगा अपने आप को, क्योंकि 20-21 के मार्केट में उसको लगेगा भाई मेरे को ही आता है, मैंने ही बनाया है. भाई तूने नहीं बनाया, सारों ने बनाया है, और किसी ने बना के नहीं दिया, मार्केट ने खुद ही तेरे को प्रसाद के तौर पे दे दिया. और अब दूसरा मुद्दा ये है, जो लोग अब नए नए घुसेंगे, एन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंडिया हैज गॉट अ वंडरफुल ग्रोथ स्टोरी, नो डाउट अबाउट. एंड इसके ऊपर कई तरह के हम बातें कर सकते हैं, बट यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ब्रॉडली मैं 3-4 लाइंस में बोलना चाहूंगा वो ये है. Before 2013-14, we were majorly consumption-driven economy. Consumption, यानी कि देश में डिमांड होती थी, प्रोड्यूस होता था, डिमांड बढ़ती थी, प्रोड्यूस होता था, जीडीपी बढ़ती थी. After 2014, we are slowly becoming a investment-driven economy. आज ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप भी और हम भी, सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं. पता है क्यों सुमित जी? पहले हम सेविंग्स करके इन्फ्लेशन को बीट कर लेते थे. अब हम सेविंग्स, जो इन्वेस्टमेंट है ना, सेविंग्स यानी कि एफडी, पीपीएफ, नेशनल सेविंग्स, उसमें जो रिटर्न आएगा ना, हम इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ना चाहते हुए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. सेविंग्स का मतलब रिस्क फ्री, और रिस्क फ्री रिटर्न कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा अब आने वाले समय में. और स्पेशली इतना पैसा जो पंप हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई, तो अब तो सेविंग्स कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएगा, सेविंग्स का रिटर्न. तो अब ना चाहते हुए भी हर आदमी कहां जाएगा? मार्केट में जाएगा. मार्केट में जाएगा मतलब इन्वेस्टमेंट करेगा. इन्वेस्टमेंट मतलब रिस्क ही होगा. इसका मतलब आना तो पड़ेगा, यानी कि अगर आपने आज तक मार्केट में नहीं लगाया तो लगाना तो पड़ेगा. गवर्नमेंट भी यही चाहती है. गवर्नमेंट क्यों चाहती है? क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि सारे लोगों का जो पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, बैंक में तो वैसी फसूल में पड़ा हुआ, गवर्नमेंट चाहती है कि आप बैंक से पैसा निकालो, या तो मॉल में जाके खर्च लो ताकि कंजम्पशन बढ़ जाए, या फिर मार्केट में जाके इन्वेस्ट कर लो ताकि मार्केट बढ़ जाए, क्योंकि मार्केट बढ़ेगी तो बाहर के इन्वेस्टर्स और आएंगे और अट्रैक्टिव होएगा हिंदुस्तान. तो ना चाहते हुए भी अगर आपको मार्केट में लगाना पड़ेगा, तो बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, गेन नॉलेज. नॉर्मली हम 10 लाख रुपए लगाते हैं, मगर हम 10 लाख से पहले क्या 50,000 पे अपनी नॉलेज पे नहीं लगा सकते? अगर वो लगा सकते हैं तो डेफिनेटली एंटर द मार्केट, क्योंकि मार्केट में अगर आप कहते हैं पीक है, तो आप और हम कौन है ये कहने वाले कि मार्केट पीक पे आ गए? महंगा हमेशा और महंगा होता है, सस्ता हमेशा और सस्ता होता है. बजाज फाइनेंस का शेयर 500 रुपए था, फिर 5,000 था, फिर आज ऑलमोस्ट 7,000 के करीब है. महंगा हमेशा महंगा होता है और सस्ता हमेशा और सस्ता होता है. यस बैंक 400 का था, फिर 200 का हुआ, फिर 100 का हुआ, फिर 50 का हुआ, आज 15 का, 16 का, 20 का. इसका मतलब ये, आपको ये नहीं कहना कि मार्केट तो पीक पे आ गई है. पीक और बॉटम किसी को नहीं पता. पीक और बॉटम को आप जज मत कीजिए. जैसी आप नॉलेज लेंगे, यूनिक नॉलेज, आपको मार्केट समझ आने लग जाएगी. और मार्केट बहुत हसीन है. इनफैक्ट मैं प्राइस एक्शन से वही सिखाना चाहता था थोड़ा थोड़ा, कि मार्केट को कैसे आप समझ सकते हैं कि ये जाएगा, जाता है क्या 10 में से 9 बार. बहुत यूनिक चीज है. Sir, another question is, what is the role of jobbers and operators, and how they affect the price? Jobbers and operators role these days has declined in large company shares. जो स्मॉल कैप होते हैं ना, स्मॉल कैप, तभी मैंने उसमें मना कर दिया कि उसमें पैसा मत लगाओ, बिकॉज उसमें काफी वॉलेटिलिटी होती है. बट जो लार्ज कैप है, एशियन पेंट्स है, रिलायंस है, HUL है, उसमें जॉबर ऑपरेटर का ज्यादा रोल नहीं. सो इसलिए you should stay away from very small shares, small cap shares. You should always be stuck with the large caps. And large cap में भी churn करना आना चाहिए. कभी एशियन पेंट्स चलेगा, कभी टेक महिंद्रा चलेगा, कभी मारुति चलेगा, कभी L&T चलेगा. वो कब आएगा? वो सीखने से आएगा. जब तक वो नहीं आता कोई बात नहीं, जब तक सीखना नहीं हुआ कोई बात नहीं. ये 10 शेयर को पकड़ लो यार.
मगर धीरे धीरे करके सीखने की कोशिश करो कि कब एशियन पेंट्स चलेगा, कब टेक महिंद्रा चलेगा, कब महिंद्रा एंड महिंद्रा चलेगा, कब मारुति चलेगा। जब तक नहीं आता 10वीं लगा के बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मगर जब तक नहीं आता कभी भी मिड कैप और स्मॉल कैप में गलती मत करो। नेक्स्ट सवाल। Sir, what is the best way to hedge my long futures trade? Shorting Nifty is better or shorting fundamentally bad future stocks? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लॉन्ग फ्यूचर की आपने पोजीशन ली है, अगर आपको डेरिवेटिव्स नहीं समझ आता तो पक्का उसको पहले तो उसको वाइंड अप करो, क्योंकि एक पोजीशन को बचाने के लिए दूसरी पोजीशन लोगे, ये तो स्पेकुलेशन के ऊपर स्पेकुलेशन हो गया, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्पेकुलेटिव मार्केट ये तो और भी नुकसानदायक हो सकता है। एक चीज से बचने के लिए दूसरा हथियार पकड़ोगे तो दोनों में फंसोगे। तो फ्यूचर्स लॉन्ग में हो और उसको हेज करना है तो भाई आप ऑलरेडी नेकेड हो और आप न्यूडिटी और बढ़ा रहे हो। तो पहले तो फ्यूचर लॉन्ग लिया क्यों? सट्टेबाजी करनी थी क्या? फिर सट्टेबाजी करने के लिए एक और सट्टा खेलना चाहते हो? ये हेजिंग नहीं है, ये स्पेकुलेशन स्क्वायर हो गया। अमन जी, आप आज वोटर्स डे पे जो यूथ है इंडिया का, जो नए लोग ज्वाइन हो रहे हैं इसमें, उनको मार्केट की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दोगे? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मार्केट्स में अगर आप नहीं आएंगे तो आप कभी भी इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते रिटर्न। एंड मार्केट में आने के मैं 3-4 ब्रॉड रीजंस भी बता देता हूं। पहला, सेविंग्स करके आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ चुकी है और अब बढ़ी रहेगी अगले 5-10 साल। अगले 5-10 साल आपको महंगाई को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट इन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्यों नहीं करना? इंडिया इज ऑन अ ग्लोबल ट्रेजेक्टरी। India has become the largest and the biggest destination of FDI and FII. तो क्यों नहीं करना? पक्का करना है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यंग इन्वेस्टर हो, यूथ हो, ज्यादा देर तक नौकरी कर नहीं पाओगे। क्यों? नौकरियां रहेंगी नहीं क्या? बहुत रहेंगी। नौकरियां रहेंगी का टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि जो नौकरियां हैं वो हर 5 साल के बाद चेंज होती रहेंगी, द टाइप ऑफ जॉब्स, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन इन द टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी। आज ब्लॉकचेन है, कल को रोबोटिक्स है, कल को बिग डाटा है, कल को एआई है। हर नौकरी में ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी आती रहेगी और डिस्ट्रप्शन करती रहेगी। तो अगर नौकरी ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे तो फिर जो आप पैसा आज कमा रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस पैसे को अल्टीमेटली मैं पैसिवली लगाना शुरू कर दूं, ताकि वन फाइंड जब नौकरी करने की क्षमता ना रहे या नौकरी हम कर ना पाए तो वो पैसा हमें कमा के दे दे। उसके लिए भी आपको मार्केट्स में आना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4, सुमित जी, हमारे हिंदुस्तान के कई यंग बच्चे हैं जो लुधियाना से, जलंधर से, अंबाला से, नागपुर से, छोटे शहरों से हैं, मगर कहां जाते हैं? बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली। अपने घर वालों को छोड़ के जाते हैं, वहां पे जाके परेशानी में जॉब करते हैं। नौकरी करके अल्टीमेटली क्या होता है, वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहते हैं। फिर शादी हो जाती है, फिर शादी में हस्बैंड वाइफ दोनों बिजी होते हैं, इतने बिजी होते हैं कि बच्चा करने का टाइम नहीं होता है। फिर पेरेंट्स क्या कहते हैं, तुम बच्चा पैदा कर लो, पाल हम लेंगे। इतनी टेंशन में बच्चा पहली बात तो हो नहीं पाता है, आजकल आपने देखा ही है, तभी तो आईवीएफ की तरफ जा रहे हैं। और अगर हो जाता है तो बच्चा बेचारा इतनी टेंशन में पैदा होगा तो बच्चे का डीएनए भी क्या होगा। फिर उसकी स्कूलिंग का खर्चा है, स्कूलिंग की टेंशन है, पालने की टेंशन है, बड़े करने की टेंशन है, इतनी टेंशन और ऊपर से जॉब की टेंशन। अरे सिंपल, उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं ना। आप अगर मार्केट में पैसा लगाना सीख जाएं, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आप मार्केट में पैसा लगाना सीख जाएं तो आप में से 2 कैटेगरी के लोग होंगे आज। एक वो जिनके पास पैसा है, जिनको 10-15 साल से ज्यादा नौकरी करते हुए हो गया है या बिजनेस करते हुए हो गया है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी जुम्मा अभी नौकरी करनी शुरू करी होगी। जिनके पास पैसा इकट्ठा हो गया है, अरे हसीन वादियों में चले जाओ, कुल्लू मनाली धर्मशाला, या अपने लोकल शहर में चले जाओ और उसी पैसे के ऊपर पैसा बनाना सीख लो। और साथ में आपके कई जो दोस्त यार हैं, एक बार अगर आपको पैसे का पैसा बनाना आ जाए तो आपके जो दोस्त यार हैं उनको भी कह दो, तुमसे थोड़ा बहुत चार्ज करूंगा, तुम्हारा भी पैसा कैसे बनाना है वो बता देता हूं। और जो यंग हैं आज,
और वो अपने घर वालों से दूर हैं शहर में, तो 5 साल का कड़वा घुट पी लो। 5 साल अपनी नॉलेज लेते रहो और 5 साल वो नौकरी सिर्फ इस लिहाज से मत करो कि नौकरी जिंदगी भर करनी है ना। 5 साल कड़वा घुट वहां पे नौकरी करते हो और साथ साथ ये वाली नॉलेज लेते हो और वन फाइंड अपने शहर वापस पढ़ो। तो ये 4-5 रीजंस हैं जिसके कारण आपको मार्केट तो सीखनी पड़ेगी, मार्केट में तो लगाना ही पड़ेगा, मार्केट से आप दूर जा ही नहीं सकते। और बेस्ट लास्ट स्टेटमेंट जो इसी में कंक्लूजन है, 99% लोग हिंदुस्तान में किसी के कहने के कारण पैसा लगाते हैं। वो कहने वाले लोग या तो ब्रोकर होते हैं या बैंकर होते हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं या हमारे दोस्त होते हैं या मीडिया चैनल वाले होते हैं या किताबें होती हैं। एंड बिलीव मी, जब आप थोड़ी सी नॉलेज लोगे तो आपको समझ आएगा इनमें से किसी को भी कुछ खास नहीं आता है। ये सारे लोग ब्रोकर हैं, ये सारे लोग अपनी कमीशन, इंसेंटिव, ब्रोकरेज कमा रहे हैं। तो वो नॉलेज नहीं देंगे, वो अपना माल बेच रहे हैं। इसको बोलते हैं गोल सेटिंग, माल बेच रहे हैं अपना। तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी नॉलेज ले लो, इन सारों से बच जाओगे। जब आप इन सारों से बच जाओगे तो पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, जब आप इन सारों से बच जाओगे तो आपका पैसा खुद बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप उनके चंगुल में नहीं आए जहां पे 99% जनता फंसी हुई है। और दूसरा, एक बार अगर आ जाए तो सोचो अपने शहर में जाके सुमित जी अगर ये फीस चार्ज करना शुरू करते हैं। सुमित जी आप कहाँ रहते हैं? सर दिल्ली। दिल्ली में एक बार का फैमिली को लंच करवाना हो तो क्या खर्चा? अराउंड 3000 2000 मान लो। 2000। 2000। मैं आपको सुमित जी मैं ये कह रहा हूं, ओपन ऑफर है, कहां पैसा लगाना है, कब पैसा लगाना है। मैं ब्रोकर नहीं हूं, मगर मैं आपको फोनो फ्रेंड हूं और आपको ऐसी नॉलेज में आपको डिस्प्ले कर दी है कि आपको अगर मेरे से बेटर कोई नॉलेजेबल मिलता तो आप उसके थ्रू लगा देना, और अगर मेरे से नॉलेजेबल नहीं मिलता तो मेरे थ्रू आ जाना। मैं आपसे महीने का सिर्फ 2000 पे लूंगा, यानी एक बार का लंच लूंगा, कोई ब्रोकरेज नहीं लूंगा। कौन से म्यूचुअल में लगाना है मैं हर महीने आपको म्यूचुअल में बता दूंगा, कौन से लगाना है, शेयर्स में कहां लगाना है, कब निकलना है, कब लगाना है और कब निकलना भी है। और सिर्फ ये शेयर और म्यूचुअल फंड नहीं, मैं मार्केट ओवरऑल पूरा पोर्टफोलियो का क्या शार्प रेशियो होएगा, क्या बीटा होएगा, क्या डेल्टा होएगा, सब बता दूंगा पूरा। तो उसके बाद क्या सुमित जी आप मेरे को 2000 पे नहीं दोगे पर मंथ का? फॉर श्योर दे दोगे, क्योंकि ब्रोकरेज तो मैं ले नहीं रहा। आपकी मैंने ब्रोकरेज बता दी, आप किसी के चंगुल में फंसे नहीं, कोई इंसेंटिव नहीं, कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ 2000 पे ले रहा हूं। तो सुमित जी पॉइंट है, ऐसे 2000 पे करते करते मेरे को कितने लोग चाहिए कि मेरे को नौकरी ना करनी पड़े। बड़े प्यार से नाना करते हुए बहुत लोग आ जाते हैं। तो सोचो, दिस एम्पावर्स यू। आप अपने शहर में रह के आप अगर 2000 पे चार्ज कर ले, या एक बार का लंच जो उसकी फैमिली का ना सर उससे वो चार्ज करो, मगर ऐसी नॉलेज रखना कि किसी और को ना आती हो, वो पक्का पैसे देगा। तो आप एडवाइजर बन गए, इज्जत के साथ आप एडवाइजर बन गए। नेक्स्ट सवाल। Sir, so many questions are coming, sir. No And problem. someone asking us, is it a good time to liquidate mutual fund investment? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड म्यूचुअल फंड है, डेट म्यूचुअल फंड है? यस। व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो आई नीड टू सी लार्ज कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है। क्योंकि मैं ऐसा ही बोल दूं कि सारे बेच दो तो ऐसा गलत हो जाएगा, बिकॉज हर इश्क का एक वक्त होता है। तो क्या पता आपका वो कोई 10 में से 2 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिनका वक्त आ गया है। तो इसलिए वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हर म्यूचुअल फंड बेचना नहीं है, हर शेयर बेचना नहीं है। मार्केट जो क्रैश भी करेगी तब भी कुछ शेयर्स बढ़ रहे होंगे। आज मार्केट 18,300 से 17,000 तक आ गई, मगर गुजरात गैस तो बढ़ गया, मारुति तो बढ़ गया। यानी कि आपको देखना आना चाहिए कि कौन से शेयर्स इन मार्केट में भी बढ़ते हुए दिखते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड नेगेटिव बीटा वाले हैं जो टूटती मार्केट में बढ़ते हुए दिखते हैं। और ये सब नॉलेज की बातें हैं। तो इसलिए ब्रॉडली सिंस सवाल आया है तो मैं जस्टिस करने के लिए यूं बोलूंगा, जितने भी आपके डेट फंड हैं, बॉन्ड फंड है, बैलेंस फंड है, हाइब्रिड फंड है, सब बेच सकते हैं। क्यों? सिंपल है, बॉन्ड का यील्ड बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो बॉन्ड की वैल्यू टूटेगी। ये तो मैं बोल सकता हूं। Sir, what stand on cryptocurrency, sir? Someone asking. क्रिप्टो करेंसी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, मगर क्रिप्टो करेंसी यूट्यूब के ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस डाल रखी हैं, वहां पे पूरा डिटेल्ड वर्जन मिल जाएगा। तो इफ यू वांट आई कैन पोस्ट दैट लिंक हियर इन द चैट बॉक्स इफ यू डू अलाउ मी। अदरवाइज मेरे को बोलते हुए ज्यादा समय लग जाए और बाकी सवाल नहीं ले पाएंगे। तो आप बोलते हैं मैं चैट बॉक्स में वो 2-3 लिंक्स भेज देता हूं, आप आराम से देखते रहना, बाकी सारे लोग। चलेगा? Yes, sir. No problem. ठीक है, तो चैट बॉक्स पे अभी आपको लिंक आ जाएंगे, तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि अदरवाइज मेरे को 10-15 मिनट नहीं तो क्रिप्टो पे दोबारा बताना पड़ेगा।
Another question, sir. What would your view be? Short option strategies deeply out of the money. सिंपल है, ऑप्शंस में Short तब जाओ term. जब आप डेरिवेटिव समझते हैं. Okay. डेरिवेटिव्स बिना समझे आप ऑप्शंस में जा रहे हैं तो नेकेड है ना, फंसोगे, मार्केट फंसाएगी पूरी. Another question, sir. हाँ जी प्लीज. That's a repeat question. If jobbers and traders' role is limited in large cap shares, does that mean that speculation does not occur in large cap shares? Why not? स्पेकुलेशन होती है, स्पेकुलेशन डेफिनेटली होती है, स्पेकुलेशन हर चीज में होती है, मगर पॉइंट है कि लार्ज कैप कंपनीज जो हैं वो अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं. तो सिंस वो अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं तो इसलिए मैंने क्या बोला कि वो डूब नहीं सकती है. Right. अगर वो कंपनियां जिन्होंने 3 तरह के क्राइसिस देख लिए हैं और वो जिंदा हैं, तो यानी आने वाले समय में भी जिंदा रहेंगी. तो इसलिए मैंने आपका रिस्क मैनेजमेंट करा, पहले रिटर्न नहीं करा. मैंने आपको ये नहीं बोला कि मैं आपको एक शेयर बताता हूं जो अगले 3 साल में डबल हो जाएगा. ये जो मल्टी बैगर्स है ना, ये आपको वन फाइन डे मल्टी बैगर्स बना देंगे. तो मल्टी बैगर्स जो स्मॉल कैप करते हैं ना लोग कि ये 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, सब मल्टी बैगर्स बना देंगे. इसलिए लार्ज कैप में पहले रिस्क मैनेजमेंट करो, क्योंकि ये मार्केट 2021 की मार्केट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं. ये 2004 से 2008 की मार्केट नहीं है, बार बार बोल रहा हूं. ये मार्केट ऐसे वाली रही. Sir, so many questions are coming, just like how many I learned from you about the market, and do you provide the PMS? If yes, and please let me know. Highly impressive. देखो, आई डोंट वांट टू पिच एनीथिंग आउट हियर, बट पॉइंट है कि व्हाट माय इंटेंशन इज, आप अगर सीखना चाहते हैं, मे बी यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी पोर्टफोलियो एजुकेशन साइट पे. सो आई कैन शेयर माय, मे बी यू कैन गेट कनेक्टेड विद मी ओवर अमन चुक सीए. आप यूट्यूब पे कनेक्ट हो सकते हैं, आप इवन अमन चुक सीए ट्विटर पे कनेक्ट हो सकते हैं. वहां पे मैं कुछ इनपुट्स देता रहता हूँ. प्लस यू कैन ऑल्सो डाउनलोड माई ऐप विच इज अमन चुक सीए. अगेन ऐप है, उस ऐप में आप जाके लॉग इन करके नॉलेज बेस्ड सेक्शन में जाएंगे, वहां पे मैं कई ऑडियोज नॉलेज देता रहता हूँ. एंड प्लस यू कैन ऑलवेज सेंड मी योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, तो आप इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं. आई कैन गेट यू एडेड इन वन ऑफ माई ग्रुप्स. So what I would suggest is maybe you can get connected with me and I will be happy कि आपको अगर कुछ और सीखने को मिलता है मेरे थ्रू तो अच्छा लगेगा. कोई नहीं. Thank you, Aman sir, for your nice deliberation. I think lot of hours required to respond to queries of members because this topic is so interesting. So, but time is a constant and because it's a endless discussion. Because whenever you are the speaker, I found that it's very hard for me to stop this VCM. And more than 2,500 viewers are there for today's VCM, I think. So somehow we have our own limitations. We have to conclude the session now. I take this opportunity to thank CA Dr. Aman Chugh for his nice deliberation and again responding to queries of the members and the public at large. I would be selfish if I don't thank to Gaurav Gupta ji, Sumit Agrawal ji and IPF Authority who motivated us to host this program. And I convey my sincere thanks to in absentia Colonel Tushar, Lieutenant Colonel Tushar Anand sir, who is the GM of IPF Authority. I should thank to my leadership also, who enabled me to host this program. They have given me C. Anuj Goyal ji, the chairman of the research committee and the committee for capital market, who enabled me to host this program, and he has given a free hand. I should thank to my colleague Mr. P.D. Giver, who was instrumental in all these logistic arrangements. So, but not last, but I think I would be not doing justice if I don't thank to the viewers. I think they are the more important pillar of this particular event. Without their patience hearing, I don't think we could have achieved this target or the very purpose of this having this VCM.
So I must thank to the viewers for their patience hearing. With this, I will take leave for the day, and I once again congratulate to all the Indians for our Republic Day. Thank you, sir. Thanks. Thank one and all. So we take leave for the day, sir. Jai Hind. Thank you ji. Namaskar, Jai Hind.